Okay, hello everyone. First of all, thank you everyone जिन्होंने अपनी सारी resumes हमें send की. We got a wonderful response from the Google form that we posted. We had over 80 resumes that we have to review. And how we will be proceeding toward is I and Hassan Zahid will be personally dividing the resumes into first we are trying to prioritize 2020 and 2019. जिन्होंने हमें resumes send की है. Once we are done with that, then we'll move to 2021 and 2022 accordingly. So I and Hassan bhai will be reviewing 25 resumes each. हम दोनों अपने personal time से करेंगे and it's very difficult for us to review all of them and just write a comments on them individually. So what we decided is कि we'll have a video session जिसके अंदर we'll make a splits on each screens और हर किसी की timeline के हिसाब से they can personally go and read our reviews. And personally what I feel is जब हम सारे resumes को हम एक comment करते हैं तो it takes a lot of more time, and not only time, we try to miss some minor details because it's hard to type and everything, right? So what we decided कि number one हम जो minute details में बात करेंगे, the HR that you apply and the company that you apply, they may or may not look into the individual details और इतनी गहराई में कभी नहीं जाते resumes के, but we just want to give in the best of our opinions कि how an ideal resume should look like. And you may or you may not follow these advices, but it's good if you do, and you can always differ with your opinions, but अगर आपको लगता है कि it can help you, तो you should definitely think about following them. We'll also discuss some templates and just resume मुझे personal लगेगा कि हाँ यार the template needs to be changed. We will try to be pretty much very transparent about it. Okay, and in this session, in my meeting session, I'll try to cover these 25. So if you think you have your name in this 25, okay, you are free to watch this video. And if you think your name lies after 25, and then this is not the video for you. But again, if you just want to have for an idea okay, how an ideal resume should look like, then I think that's a pretty good way to start. Uh, okay, I think that's about it. Let's start with Jay Kumar. अच्छा, also one more thing, there are a couple of things जो कि हर resume में common होंगी. These include some standard practices, let's say some patterns and couple of other things जो कि दूसरों पे भी apply हो सकती हैं. But I would not generally ask you to watch every single video. We'll try to cover as much as we can. And if there is something that I feel that has been discussed well in previous resumes, then I'll just refer you to that. Okay, and also, one more thing, if you think we are invading your privacy, just let us know because I feel that resumes are pretty open. You can send it to everyone, so we don't feel an element of anything personal in this. So that's our opinion. We could be 100% wrong. Okay, so first is Jay Kumar. Number one, whenever you try to upload your resume, just make sure you never upload from your mobile phones because this is what you get. क्योंकि drive upload होती हैं, so an implicit prefix is appended. And number two, if you're applying sending your resume to some in company organization, then you shouldn't be sending like this. If you remember, if you just open the form that we sent, we explicitly ask you to send in this manner, first name, last name, resume, because this is how a resume should look like, right? For example, Ashmal space Fahani slash resume, right? Or it could be Ashmal underscore last name if you want to avoid these white spaces. But this is not how you should resume. If jaykumar.resume, and even an ideal case is someone can write jaykumar.pdf. So that means it explains about Jaykumar, right? Okay, so apart from that, it's a one-page resume. This is very ideal. Make sure that you don't have a resume over one page unless it's your academic resume. Academic resumes are something जो कि आप जब funded masters या फिर PhDs के लिए apply करते हो and you think you have publications, you have some conferences, you have a bunch of experiences, you have some research projects that you want to explain in detail. This is where the academic resumes comes in. My personal resume is academic resume. I will show both my academic resume and my personal resume at the end of this video. So make sure your resumes are not more than one page. This is good about this resume. However, if you look at the phone number, country code missing, email address is fine. This way of writing GitHub and LinkedIn is not very ideal. Maybe when you're opening in a PDF, you will open this and see, okay, this some GitHub. Also, we are not commenting on how your GitHub is looking like, how your LinkedIn looks like, or anything. We are just making sure, okay, it's there, it's working. This GitHub and LinkedIn, you shouldn't keep it like that. Instead of this, just write your GitHub username and write your LinkedIn name, just say linkedin.com/in/ just write your username, right? तो ये because when it's printable ना, मैं पेपर पे क्लिक करके तो नहीं खोल रहा ना, तो just make sure कि it's well written, it's representable.
कंट्री इज इम्पोर्टेंट इन द केस जहाँ पे आप रिमोट रेज्यूमेस के लिए अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करता है, सॉरी, रिमोट पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे इट्स नेसेसरी बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि दे वेयर दे हायरिंग द कैंडिडेट फ्रॉम। एंड इफ यू थिंक कि लोकल है तो भी इट्स फाइन इफ यू कीप इट देयर। ओके, रेज्यूमेस दो तीन तरह की होती हैं। यू वांट टू कीप योर एक्सपीरियंस ऑन द टॉप, इट्स फाइन, एजुकेशन ऑन टॉप, इट्स फाइन, जस्ट मेक श्योर यू कीप योर highlight on the top. So whatever you think your highlight is, just make sure it's on top. This resume, I and Hassan Bhai has like combinedly discussed as well. मैं just यहाँ पे बता दूँ, experience, business analyst, apprentice, Shakespeare, this is fine कि what your position is and what's your company, it's fine. However, जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी ना उसके बारे में यहाँ पे, that is यहाँ पे ना, if you look at this is October 23 से present, this is February 23 से December 23, and this is complete. So I don't like how the months are written. So if you're either writing OCD, which is an abbreviation, then you should write then you should be consistent with every word. But यहाँ पे you see it's Feb and December, so it doesn't really look nice on the resume, right? So that's what you have to make sure. Now, spearheaded collaborative efforts with cross-functional stakeholders, orchestrating engaging workshops and requirement gathering sessions. अच्छा, number one, collaborative efforts with cross-functional stakeholders. So cross-functional stakeholders of what department, right? And orchestrating engaging workshops. So which engaging workshops, all right? And requirement gathering sessions. How did it help? So make sure जब भी आप अपने companies के experiences के बारे में लिखते हैं ना, तो they should follow a pattern, and that is why you did that, how you did that, and what impact did it make, right? तो the impact words are missing. यहाँ पे लग रहा है कि थोड़े buzzwords ज़्यादा हैं, जैसे orchestrating and spearheaded, ये वाले लिख लिया, बट मुझे वो पढ़ के समझ नहीं आया कि आपने एग्जैक्टली क्या किया। सो आई वुड, so let's read the next, then we'll tell you. Develop a comprehensive set of user stories. User stories for what? ठीक है, किस चीज के लिए यूजर स्टोरीज बनाई? एंड यूज केसेस, फैसिलिटेटिंग क्लियर कम्युनिकेशन एंड रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन, fostering a shared understanding among development teams and stakeholders. Again, who are the stakeholders? Direct stakeholders, indirect stakeholders, internal stakeholders, external stakeholders, or development teams में भी, if you're talking about the programming team, then उनको कैसे help किया? जैसे मतलब ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही कि how did it help them? ठीक है, आपने comprehensive user stories बना दी, so like this more looks like a PM role, ठीक है, which is fine because this is a BA, but if that's what the BA is supposed to do, then make sure you're writing exactly. So for example, this user stories can be, okay, the point is, okay, if you're writing, you have made a comprehensive story, user stories, I'm not able to comprehend how different you are from the any other BA or any other PM role applicant जो कि इस position के लिए apply कर रहा है. So it doesn't really introduce me to read, right? So crafted and maintain detailed project documentation contributing to enhance organizational efficiency and a 15% reduction. Acha, it's very good to quantify your results, ठीक है, when you write कि this much has improved, this much has not improved, but in my opinion ना, quantify where it should be applicable. जबकि यहाँ पे अगर आप देखो तो it's fine, it looks like you have made a detailed project documentation and it says the efficiency has been increased by 15%. How do you measure that? What is a metric of measurement here? क्या आपने जो लोग, अगर मुझे एक documentation पढ़ने में पहले 10 मिनट लग रहे थे, तो क्या 15% के हिसाब से मुझे 7.5 मिनट लग रहे हैं? So have you been capturing that, or how do you quantify that? So this doesn't make sense यहाँ पे quantify अच्छे से नहीं हुआ होगा। और I would have rather like कि अगर जैसे हम अपने पास, जब मैं last time when I was in Anchorage, so what I used to do, we used to have this confluencing, वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन लिखते थे. सो आई यूज टू नेम दोस्त कि यार maintain documentation on Confluence, but just assuming one thing, isn't this something that you are supposed to do implicitly? Like, isn't this part of your job title? If this is your JD, then I think you should write those narratives जो कि आप और अच्छे से कर सकते हो या अच्छे से किए हो, unless you have spent a very short time, which is in this case. So maybe it's fine, but I would say, yeah, write something that's more relevant to your that describes your job that you did. Okay, because any BA is doing the same. So what did you do at Shakespeare? So that is the exact question. And again, last वाले में भी ये है कि आपने conducted stakeholder meeting. Which stakeholders? So for example, if you're talking about stakeholders of clients, so they are more valued, ठीक है, when you write it in your resume, क्योंकि आपने direct contact किया. तो if they are not client, then they are not worth mentioning. Or even they are, just write it कि वो कौन है, resulting in improvement in decision making and a decision making speed and a 10% reduction in project timeline. ठीक है, maybe 10% here sounds more logical, but quantification है ना तब अच्छी लगती है जब आप, for example, when you're talking about accuracies, when you're talking about this, तो वहाँ पे exact numbers के साथ जब हम बात करते हैं ना, तो that is more
relevant, I would say, ठीक है. But if you're sure this 10% is 100% correct, then go for it. But I do not like कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि improvement in decision making speed. So see, if you are having a meeting, that implicitly means कि you are improving the decision making. But with whom did you have the meetings? तो आपने कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसके जरिए decision making improve या something? And that is what you're supposed to talk about, right? स्किल्स पे आते हैं जरा, सर्टिफिकेशंस पे देखते हैं. सर्टिफिकेशंस इज फाइन, ठीक है, आपने यहाँ क्रेडेंशियल्स वगैरह भी डाल दिए, ठीक है, इट्स फाइन. अगेन कंप्लीटेड मल्टीपल टास्क रिलेटेड टू डेटा क्लीनिंग एंड मॉडलिंग, ठीक है. एंड आपने तो यहाँ पे जब मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो यू डोंट एंड यू राइट कॉमा 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 एंड लास्ट वन. मैन बेसिक ग्रामर है, हमेशा रन योर रेज्यूमे थ्रू ग्रामरली, दैट इज द मोस्ट आइडियल थिंग दैट यू कैन डू, एंड दिस इज द मोस्ट लीस्ट थिंग यू कैन डू. आई कैन सी कि कुछ जगहों पे फुल स्टॉप से एंड हुआ हुआ है, कुछ जगहों से फुल स्टॉप एंड नहीं हुआ. जस्ट सी पैंडा स्पैंड हुआ हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ हुआ है यहाँ पे. सो जस्ट मेक श्योर योर रेज्यूमे इज कंसिस्टेंट, otherwise it doesn't cast a good impression, right? And multiple tasks related to data cleaning, कौन से task if you could explain कि भाई मैंने इन projects पे काम किया, they are deployed here, तो it would have been like a more highlight, ठीक है. And education, bachelor's of science in computer science, one thing I write, degrees completely and clearly mentioned. Fast NUCs is nothing but always write National University of Computer and Emerging Sciences, and this is a better idea. Fast NUCs, आप हमेशा एब्रीवेशन संभाल ही करते हैं. आर यू राइटिंग एब्रीवेशन फॉर योर नेम? नहीं. इफ यू राइटिंग एवरी फुल नेम फॉर योर डिग्री, then just make sure national is university name is also like completely written, and try to make it like this way. Just organization name should be prior then as compared to जहाँ से आप पढ़ रहे हो, but it's fine. I think that's going too much in detail. Karachi, Pakistan, ठीक है. Relevant coursework, but yes, this is something I like. यहाँ पे वो relevant coursework के नाम लिखे हुए हैं that is related to the position that you're applying for, that is related to your. And how did I get to know your position is because you have experience, right? But if you write anything more than 4 courses or 5 courses that are relevant, ठीक है, then it becomes useless. फिर अब उतना user पड़ता नहीं है. And secondly, these OOP and these maybe requirement engineering is important, but ये वाले जो courses है ना, जैसे AI है, it has no use in the BA your position, क्योंकि आपने कहीं भी अपने resume में बात नहीं की हुई unless apart from your this project, ठीक है. So if you think the position you're applying for does not involve the role of AI, just remove it, ठीक है. Don't make it very hard for reader to read all these things. So that is my suggestion. Projects में multi-model recommended systems, FIP, please write full final year projects. That's a more better way to go. Incorporated multimodal recommended system that seamlessly incorporate both textual and visual information, enriching the recommendation process with a multi-facet approach. They can implemented advanced algorithms such as RNN, CNN to analyze diverse modalities, achieve an outstanding 91% accuracy in both CNN and RNN, integrating textual and uh, visual information for enhanced recommendation accuracy, right? So in this case, 91% is well, ठीक है, is well written. In this case, यहाँ पे quantify कर सकते हो. However, that I don't like, since I have an idea about these algorithm that you have mentioned, AIs and deep learning stuff. Multi-modality, ठीक है, आपने लिखा है कि RNNs and CNNs, but अगर आप RNN है तो you could write something more than that. For example, you can write continual learning or these the concepts and these basic fundamentals, जो कि लॉन्ग लर्निंग एंड सीक्वेंस टू सीक्वेंस टैक्स, इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हो, राइट. एंड नंबर 2, मुझे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आया कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. आई जस्ट गॉट टू नो कि यू ट्राई टू इंटीग्रेट योर टेक्सुअल एंड विजुअल डेटा, राइट. तो यू दैट इज व्हाट मल्टी मॉडल रिकमेंडेड सिस्टम्स डू, एंड इवन नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज दीज मल्टी मॉडल रिकमेंडेशन सिस्टम्स, और मे बी दे डोंट, ठीक है, दैट्स सेपरेट डिबेट. बट मुझे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आया कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू यार. तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, हमेशा पहली लाइन में लिखते हैं कि वो व्हाट डिड यू डू. And I'm sure इस stage तक your FIP is complete because I can see your timeline. तो I would say कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिखो और एक लाइन है ना अपन टैक्स स्टैक की भी लिखो. तो आपने कहीं डिप्लॉय भी किया होगा, तो इफ़ यू हैव डिप्लॉयड इट टू सम बैकएंड, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक देयर दिस पोजीशन इज हाई वैल्यूड, कि अगर आपको डिप्लॉयमेंट भी आती है, आपको अपने ML मॉडल्स को कहीं पे फ्लास्क वगैरह KPI बनाने भी आती है, तो दैट इज आई थिंक मोर वैल्यूएबल. सो CNN और लिखा हुआ है यू हैव अचीव द एक्यूरेसी ऑफ 91% इन बोथ. I'm not sure, क्योंकि you can never have same accuracies for 2 models. If you have, then it's fine, but problem statement clear नहीं है, ठीक है. So that is my suggestion for the first road accident analysis. Personal projects. What I think if you have graduated from FAST University, right, in this 4 years, you should have at least 4 to 5 projects in your entire coursework. So that is not possible that you can just name your one FIP. You should have other highlights of your projects as well. Just make sure to include them. Because maybe it's your personal project and we are well interested in your personal project. And if your personal project aligns perfectly with the position that you're applying for, then maybe it's fine. But if you're writing Olympics data analysis and you are writing you have done the data cleansing part and you
have country specific analysis and comprehensive overall analysis. So these analysis बहुत दफा repeat हो गए. And even after that, I did not got to know what analysis you're talking about. Maybe you're talking about कि यो आपने कोई specific year wise annual sports fitness की कोई report generate करके दे दी. So that would have been more sense. I like कि इसने लिखा है कि matplotlib, seaborn इस तरह की चीजें इसने use की हैं. But just imagine कि these are simple Kaggle projects. These will not lend you this will not lend you a very high impression on any employer who's reading this. So because if you're writing the good thing is I see is you're writing yes, you know Power BI, you know Pandas, you know Seaborn, you know Matplotlib, and maybe that's required for a BA or maybe a data analyst to know. But these projects are not of such a high level that this sets you apart from any other candidate. Okay, maybe I'm being too harsh, but that's my just a personal recommendation. What I would have done, I would have included one of my university project कि अगर आपने कोल में कोई इतना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया हो, एआई में कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया हो, एंड इफ यू हैव नॉट डन एनी प्रोजेक्ट, यू कुछ तो सबमिट कराया होगा ना, चाहे वो आपने सीनियर से लिया हो या कुछ भी किया हो. ठीक है, आई एम लाइक बीइंग ऑनेस्ट बिकॉज आई नो पीपल जिन्होंने मेरे ही प्रोजेक्ट्स लेके आगे आगे सबमिट कराए हैं, एंड आई कुड सी देम ऑन देयर रेज्यूमेस. तो आई विल नॉट पॉइंट देम, बट just include some projects, right? These projects are very basic level. FIP is good, but it can be a better written. So maybe just spend a 1 hour on your resume total, and you should be good to go. Skills wise, I feel that Excel is not a skill. Excel is something that every CS graduate would know. So this doesn't set you apart. ठीक है. बाकी आपने यहाँ पे Python में pandas, numpy and matplotlib वगैरह लिख दिया ना. See this pandas, numpy ये सारी ना ये these are libraries. Even अगर ये framework भी होता ना जैसे TensorFlow है, PyTorch है, तब भी make sense करता, but आप Python की सारी libraries नहीं लिखने वाले, right? SQL Server, MySQL, PostgreSQL, this is very good. But जो आपने heading डाली ना SQL के, this is not right. Maybe it should be databases. So that would have been more accurate. And I feel कि skills and projects पे भी आपने थोड़ा gap ज़्यादा छोड़ा है. तो Excel do not write Excel. आपने यहाँ पे सब Power BI लिखा है. Maybe you want to write Tableau and maybe some other thing, but yeah, write some more skills. जो आपने programming languages सीखी हो, C++, C, Java, इस तरह की languages, अगर आपने कोई अपने tools सीखा, आपको AWS आता है, इस तरह की चीज़ आती हैं, तो just make sure that you spend some time on your resume. So this is just for the first resume. And still, if you think you have a revised version of your resume, just feel free to send me. Jay, you have my number. So feel free to send me a resume anywhere you can, and I'll be more than happy to go over it again. Okay? And I'm sorry if I went too harsh on your resume, but we'll just try to be as humble as possible. Next resume. Khwaja Abdullah again, K20. Naam I don't like. Khwaja Abdullah. Okay, so I see it's a 2-page resume. Very turning off point. As a fresh graduate, you should not have a resume of more than 1 page. Even 1-2 साल का experience we shouldn't have. What you do when you're experienced, you start cutting off things that are irrelevant. ठीक है. And you see the starting में आपने ना तकरीबन कितना, let's say आपने one portion तो आपने अपने resume का just waste कर दिया. Just write these: Khwaja Abdullah, software developer, okay, and phone number, email, LinkedIn. Okay, this I think this could go here and resume आपके ऊपर चली जाती. So this is not really needed. I mean, man, don't waste that much space. Secondly, LinkedIn पे ना ये जो जब आप URL डालते हो, so the last part when you mention this is complete garbage, right? So just remove this part. How you can do that is मैं दिखा देता हूँ, like to for all of you to know. ठीक है, you open your LinkedIn, right? And यहाँ पे आपके पास पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल का आता है. इफ यू गो ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे ना यहाँ पे एडिट कस्टम यूआरएल, यहाँ पे स्लैश में जाकर ना बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं. तो जस्ट रिमूव दैट एंड मेक श्योर दैट आप ही का नाम यहाँ पे हो. सो it is a better impression than writing those garbage numbers. And if your name is not available, just write 1 or 2 extra letters at max, but don't write this is like very unprofessional. I don't really like it at all. And secondly, जब आप LinkedIn लिख देते हो ना, so you don't have to like linkedin.com/in. Just Khwaja Mohammed Abdullah is fine. Clickable link is fine. Even if you write that's fine. But first of all, you need to change your resume template number 1. ठीक है, एक पेज से ज़्यादा होना नहीं चाहिए because you are just wasting a lot of stuff space here. यहाँ पे it really doesn't have a very good image. And your 2020 batch, so you have to be like really
you have to just make these changes really quick. Currently enrolled in Bachelor's of Computer Science. I think मैं ये आगे भी education में पढ़ लूँगा. Not needed. I bring a solid foundation, computer science, determination to excel in a dynamic programming environment. भाई आपने कहीं से उठाया है? No full stop. My academic background has equipped me with strong problem solving skills and proficiency from blah blah blah. I'm eager to apply my knowledge in the real world. ठीक है. Yeah, see, in some cases, not even not writing in an objective statement is honestly fine. If your resume doesn't have that much space, you don't really have to write this, okay? And I feel in this case you can just take it out. मुझे objective लेकिन से problem नहीं है, but that doesn't reflect about your position or either your past experience. You just write के you are equipped with problem solving skills and proficiency in programming skills. तो वो आपके skill section से मुझे पढ़ के समझ आ जाएगा. Just tell me something ना कि for example you are अगर आप क्या बोलें proficiency या problem solving पे with a high experience in the domain of deployment, let's say, or in the field of deployment, or let's say in the field of designing uh, MVC architectures or something, इस तरह का कुछ होता ना, तो it would have been like more intriguing. Other than that, it's just a generic statements. Generic statements are not well appreciated. ठीक है? If you write it, then it's fine. If you don't write it, then it's fine as well. And in this case, I would prefer you don't write it unless you have a lot of space that you don't want to spare. Work experience, IT intern, Arif Habib. In this, always make sure this goes up and this goes down. Arif Habib should be top and IT intern should be in bottom. Also जो आपकी recent organization होती है ना, that should come up. ठीक है, तो you should bring that up or bring that down. Even if you want to write IT intern and RFA side by side, it's fine. इस तरह भी लिखोगे चल जाएगा. But this should go up. 2023 वाला पार्ट तो obviously ऊपर जाएगा. ठीक है, तो फिर पहले से पढ़ने से स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेटिंग मसले भाई, या तो फुल स्टॉप डालो या तो ना डालो. डेवलप वेबसाइट फॉर ISO बेस्ड असेट मैनेजमेंट. वेबसाइट कहाँ पे बनाई, क्या किया, implemented multi-auth for multiple roles using Laravel Spirit package. Although I'm not 100% sure about the development field, so I would rather not comment on the content. But जो मुझे पढ़ के लग रहा है ना, so don't you think multi-auth is automatically necessary when you are using multiple role-based authentications? Like this some basic stuff that we read in IS and etc. So I think in this case, multi-auth is implicitly understood. And also don't read auth, it's multi-authorization. Something, मतलब don't use abbreviations यहाँ पे. Or if you're using abbreviations, put a full stop. And it's not recommended to use an abbreviation. And आपने multiple roles कौन से थे, multiple authorization किस तरीके से निकाली? Implemented assist asset, so I'm sorry, asset risk management and risk management. Repetitive, ठीक है, using MySQL database. ठीक है, okay. अच्छा यहाँ पे आपने नेक्स्ट पॉइंट भी डाला हुआ है और आपने उस पर नहीं गए. डेवलप डायनेमिक फॉर्म फील्ड्स बाय रीडिंग एक्सेल फाइल ऑन रन टाइम यूजिंग मैट वेबसाइट एक्सेल लारावेल पैकेज डिजाइन फ्रंट एंड यूजिंग HTML CSS to bootstrap. इस केस में ना rather not just have a link. ठीक है, ये लिंक आपको ऊपर डालनी चाहिए. आपने ऊपर गेटअप की लिंक नहीं डाली मेन, बट यहाँ पे ना क्लिकेबल लिंक बना दिया करो. क्लिकेबल लिंक इज बेटर देन राइटिंग द कंप्लीट रेज्यूमेस. ठीक है, ये आपका हो गया पहला. और अगेन भाई जस्ट रिफ्रेज इट, जस्ट डोंट पुट योर टेक्नोलॉजीज एवरीवेयर. जहाँ पे टेक्नोलॉजीज की नीड है वहाँ डाल दो. और वरना ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले डालो, फिर दिखाओ कि व्हाई यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट नोबडी एल्स गॉट. ठीक है, सो दिस हैज मोर इंप्रेशन बिकॉज इफ यू राइट यार मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, एज एन इंटर्न योर जॉब वाज टू मेक एन वेबसाइट, इट्स फाइन, बट how did you make it so good that other interns couldn't? So that's more appreciated when you apply for a job. IT intern, Arif Habib. Okay, Arif Habib. I'm not sure if I know this place, but manage websites and web applications, develop for a company and other departments. Other departments, कौन से department? Like, is it necessary to mention other departments of the office? Not appreciated. Using C sharp in the IT department. तो जो C sharp को use करते हो आपने manage किया नहीं किया ना, कुछ आपने C sharp के tools use किए होंगे. How did you manage the websites? You manage the ticket systems. You manage the complaints. ये सारी चीजें क्या आपने क्या किया? So you have to be like really specific about what you're doing. Work with databases in MySQL and SQL Server, ensuring smooth data. How do you claim this smooth data management? Do you have any metric for that? Okay, if not, then what techniques did you use? You use indexing, you use clustering, you use, what did you use to ensure data management smooth? And when you say smooth, क्या आपने कोई dump किया आगे जाके कहीं data, या what did you do? It's very like hard to absorb. Gain a comprehensive understanding of how the IT department supports and assist other departments within the office. Uh,
See, if you're gaining an understanding of how a department is working, how does it add to your role as a, कहीं भी आप जाते हो तो it's a job to learn. It's not something that you should mention in your resume that you learned this. आप jobs में लिखते हो, work experience लिखते हो, what did you apply? Not just what did you learn. अगर यहाँ पे लिखते ना कि I gained the understanding of IT department supports, नहीं यार, जैसे maybe right, I understood how IT departments का ये particular mechanism works and I applied that knowledge into this problem, that would have been like way better in my opinion. ठीक है, that would have been way more better. Education bachelor's in computer science fast NEC यार पूरा लिख लो NECS को, क्या हो गया? August 2020 till date, no, not till date, just write present. August 20, and nobody cares about your college, man. If you are in university you are expected to clear your college, ठीक है, and school, so don't write college, schools and everything यहाँ पे. Education में if your GPA is good, if you think your GPA is better, in my opinion अगर आपके 3.5 से ऊपर है, या yeah, man, just don't blame me for that. But I think if your resume is good and if your GPA is good enough, write it in your resume. If it's not, it's fine, कोई बात नहीं, but don't write it in your resume, okay? And यहाँ पे ना कोई relevant course first लिख दो जो आपने courses पढ़े हों that supports your resume. Just supports your resume for the software developer. Just like in this case, यहाँ पे आपके data structures हो सकते हैं, algorithms हो सकते हैं. अगर आपने compiler construction पढ़ा है, इस तरह के courses पढ़े हैं जो कि elective होते हैं, जैसे HCI है, तो वो that's really better. बाकी अगेन प्रोजेक्ट्स आपने दो लिखे हैं, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल कि आप बीइंग अ ग्रेजुएट आप जस्ट दो प्रोजेक्ट कर लो फास्ट से. तो मे बी यू शुड फोकस ऑन राइटिंग मोर प्रोजेक्ट देन जस्ट स्टैकिंग द मोर पॉइंट्स. आपने 5 5 पॉइंट्स लिखे हैं, आइडियली 2 से 3 पॉइंट्स इनफ होते हैं. डेवलप अ क्रिकेट रिलेटेड ऐप फॉर FIP1 यूजिंग रिएक्ट नेटिव. क्या है बनाया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? क्रिक विजन तो है, क्रिकेट रिलेटेड ऐप भी बना दिया, बट वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? कोई तो प्रॉब्लम होगा ना जिस फंडामेंटल पे आपने अपना FIP बनाया है. एंड फॉर FIP1 नहीं लिखते, जस्ट इतना लिखो कि जस्ट डेवलपर, और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए कि दिस इज योर फाइनल ईयर project. Trust me, guys, final project can takes you places, right? So if you know about us, you know, I'm not going to repeat it, but FIP can takes you places. It's just how you present your final year project. But in this case, मुझे जाके मेहनत करके पढ़नी पड़ी कि this is the FIP project that you build on React Native. The backend infrastructure was conducted in this MongoDB. This implemented token-based multi authentication. अगर आप GW use करो तो authentication तो होगी token based. So how do you claim it's as an highlight of your project? And Mongoose, ठीक है, मोबाइल बेस्ड लीग रजिस्ट्रेशन एंड स्केजुलिंग मैसेज, दिस इज अ पॉइंट जो आपको हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पे आप ऊपर ले जाओ. डिजाइन एन ऑक्शन मॉड्यूल फॉर प्लेयर बिटिंग इन द नीड्स, थोड़ा ऊपर ले जाओ. वर्क विद कंटिन्यू विद FIP2 टीम रिकमेंडेशन. अच्छा, इफ यू आर इन FIP1 डोंट राइट के हम जो ना अगले टाइम पे यही करेंगे, दिस इज माय FIP1 प्रोजेक्ट. जस्ट सिंपली राइट कि सो फार यू हैव डन दिस. ठीक है, इससे ज्यादा रिज्यूमे में जगह भी नहीं होती. जस्ट बिकॉज यू हैव राइटिंग टू पेन, दैट इज व्हाई यू हैव सो मच स्पेस. जस्ट 3 पॉइंट्स. टेक्नोलॉजीज वाला पॉइंट्स पे लास्ट होना चाहिए थी कि आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की. प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी नंबर 1, हाउ डिड यू सॉल्व इट शुड बी प्रॉब्लम 2. ठीक है, एंड हाउ डिड यू सॉल्व इट शुड नॉट इंक्लूड द टेक्नोलॉजीज. हाउ डिड यू सॉल्व इट में होना चाहिए कि आपने क्या मैकेनिज्म या क्या थॉट प्रोसेस लगा के इसको सॉल्व किया. कराची सिटी FC आपने जो है ना एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना ली, डेवलपर वेब बेस्ड एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेड एडमिशन फीस मैनेजमेंट एंड ईमेलिंग रिमाइंडर यूजिंग लारावेल. ठीक है, दिस इज फाइन. बायोमेट्रिक अटेंडेंस यूजिंग, दैट इज फाइन. इम्प्लीमेंटेड इन्वेंटरी. बट फर्स्ट लाइन में आई थिंक 3 पॉइंट पे रहो, 3 पॉइंट ईच. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थर्ड में टेक्नोलॉजीज आपने क्या यूज किए, और हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, second project is good, no complaints about it. Skills में Laravel, Node.js, React Native, MongoDB, ठीक है, it's fine. But यार आप लोग है ना स्किल्स को अपनी थोड़ी ज़्यादा बताओ, कि ज़्यादा लिखो. नंबर 1, डोंट राइट एनीथिंग दैट यू डोंट नो. अगर आप किसी चीज़ में बिगनर लेवल पे हो, डोंट राइट. ओनली इफ यू आर इंटरमीडिएट अबव, देन एंड ओनली राइट इट. बट यू कैन राइट मोर स्किल्स, जैसे C++ है, जावा है, इस तरह के लैंग्वेजेस है. और फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज सिंपली सर्च ऑन गूगल कि यार एक वेब डेवलपर की रिज्यूमे कैसी लगती है. उसमें से अगर वो स्किल्स आपको आती हैं तो जस्ट सिंपली राइट इन योर रिज्यूमे. इफ यू डोंट नो दैट स्किल्स एंड इफ यू वांट टू लर्न इट, तो then that's the best time to learn. दिस इज अ कंप्लीट, आई ओवरऑल आई वुड नॉट रेट इट अ वेरी गुड रिज्यूमे. पहले एक पेज पे लेके आओ, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी. डोंट वेस्ट दिस मच स्पेस. जब आप एक पेज में लेके आओगे तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी. जस्ट पुश इट ऑन द राइट साइड. दिस इज मे नॉट बी नीड. वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा ठीक करो, एक्सप्लिसिटली बताओ. बिकॉज सी, if you are, even if you are the topper of your batch, by looking at this resume I won't get to know कि you are the topper of your batch. So just sell yourself right. ठीक है, गिटअप शिटअप डालो और प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने बढ़ाओ यहाँ पे. लेट्स गो टू नेक्स्ट. सॉरी, अम्मार सिद्दीकी. दिस इज अ वेरी गुड नेमिंग कन्वेंशन. ठीक है,
Mm, yes, I have gone through this resume before. ठीक है, नाम ठीक है, और ईमेल भी ठीक है, फ़ोन नंबर भी ठीक है। आइडियली वन फ़ोन नंबर इज़ इनफ, जो भी आपका नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। ये मैंने आई थिंक ये मैंने चेक किया था पोर्टफोलियो डॉट नेपलीफाई, नेटलीफाई, एंड आई थिंक इससे ज़्यादा ना यहाँ पे अगर आपका नाम होता है ना, ये वाला अम्मार से देखिए पोर्टफोलियो डॉट नेटलीफाई, तो वो बेटर होता है, क्योंकि प्रिंटेबल मैकेन में नजर नहीं आता। गिटअप बहुत, गिटअप सही है। सी दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, राइट? इस पे नहीं आते। दैट्स योर पर्सनल, मे बी विल डिस्कस इट सम अदर टाइम इफ यू वांट, ठीक है, बट विल स्टिक टू दिस। लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। आई लाइक हाउ द resume is one page only, ठीक है। एंड resume, अच्छा, even though he has written a lot, ठीक है, but resume doesn't feel over characterized या over texted. So this is what I'm talking about. Make sure, ठीक है। एजुकेशन में फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी चेंज करो, NUCS पूरा लिखो, ठीक है। Even if you write National University of Computer and Emerging Sciences, people will know it's fast, ठीक है। You don't have to write fast, but if you write, it's fine. BS in Computer Science पूरा लिख लो यार, Bachelor's in Computer Science. Grad is not a good idea. जस्ट राइट योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग, बिकॉज एम्प्लॉयर स्टार्ट लुकिंग फॉर, एक ही इंप्रेशन कास्ट करता है कि आपने 4 साल में कंप्लीट किए। हाँ भाई, 4 साल में किए, इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड, GP देखिए पता चल रहा है। बट इवन इवन देन राइट कि भाई अगस्त 2020 टिल जून, और नहीं, और ये लिखो कि प्रेजेंट लिखते हैं, इफ यू नॉट ग्रेजुएटेड ईयर, डोंट राइट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन, दे विल आस्क यू, ठीक है। क्यूमुलेटिव GPA, इट्स फाइन, इट्स गुड, ठीक है। डीन्स लिस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप GPA अगर लिखने लायक है, इफ यू थिंक इट शुड बी रिटन, एंड अब मुझे ये बड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या, okay, this is 3.78. Now let's look at the resume. It does not make me biased, but it will provide me an impression कि यार अगर इसने GPA हासिल की है, तो there is a chance कि इसने जो अपना कोर्स वर्क किया होगा, एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग इसको ठीक होगी। That's just my opinion, ठीक है। I'm not being biased. I'm not saying कि others won't have it, but this is an edge that helps you when you have something, ठीक है। डीन्स आर फाइन, ठीक है। कोर्स वर्क में अगर इसमें आप नंबर कर देते ना, डॉट डॉट डाल के या कुछ कर लेते, दैट वुड हैव बीन मोर गुड, ठीक है। टीचिंग असिस्टेंट्स वगैरह मैं समझ गया। इसके ये अच्छा, कोर्सेज है ना, सारे लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट राइट 3 to 4 और 5, दैट्स मोस्ट रेलिवेंट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर, बट अबाउट पढ़ के शायद समझ आता है। स्किल्स में आते हैं C++, C#, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, एक्सीलेंट फ्रेमवर्क, .NET, React, these are very good frameworks if you have a pretty good understanding of them, ठीक है। प्रोडक्टिबिलिटी में Git, Linux, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास Git भी लिखा हुआ है। यू थिंक Ubuntu Linux is nothing, but having it in your resume makes a lot of difference। अब इसमें आपको बैश भी आता है, सेल्फ स्क्रिप्टिंग, जबकि अगर किसी को लिनक्स आता हो तो उसको बैश ऑटोमेटिकली आती होगी, राइट? बट इफ यू राइट बैच एज अ सेपरेट टूल, इट्स फाइन, इट्स गुड। लेटेक्स में भी इट्स नॉट नेसेसरी, मार्कडाउन वगैरह, ठीक है। लेटेक्स टूल किट्स नाइस। क्लाउड तकरीबन आपने पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, जैसे अच्छा, क्लाउड में अज्यूर डेवऑप्स, दिस इज नाइट, अज्यूर क्लाउड सर्विसेज, अगर आप वो लिखते हैं जैसे AWS, बट ठीक है, डॉकर वॉकर, डेटाबेसेस भी ठीक है, सर्टिफिकेशंस भी ठीक है। इसका अगर यहाँ पे लिंक डाल दो ना, क्लिकेबल लिंक, जहाँ से आपके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई हो जाए, अबाउट की हेडिंग नेसेसरी नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशलाइजिंग इन डिजाइनिंग कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड ड्राइविंग न्यू फीचर इंप्लीमेंट, अप्रूवल एंड ट्रैक ऑफ कोऑर्डिनेटिंग टर्म्स थ्रू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है, चल जाएगा। बट अगर ये ना भी लिखते तो भी चल जाता, because it doesn't provide any special information that your resume doesn't, right? Software engineering intern, Geritech, November 23 से present, worked on front end using React Native to maintain and build new functionalities in the product, pure privacy, ठीक है। अगर आपने काम किया, बट कौन सी न्यू फंक्शनैलिटी मेंशन दो। अच्छा, डोंट थिंक यार, जस्ट बिकॉज आई वर्कड इन अ कंपनी आई कैन नॉट राइट इट इन माई रेज्यूमे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। रेज्यूमे में यू कैन राइट इट बिकॉज रेज्यूमे इज नॉट फॉर पब्लिक सेलिंग, रेज्यूमे इज फॉर ओनली द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू अप्लाइंग फॉर। तो यू कैन राइट यहाँ पे कि आपने कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज काम किया। इम्प्रूव यूनिट टेस्ट कवरेज ऑन सोनार फ्रॉम 70% टू दिस वन टॉकिंग अबाउट, ये क्वान्टिफाई होता है कि आपने 70% से 80% मिला है, बट ये भी लिखो कि कैसे किया। इम्प्रूव कोड क्वालिटी बाय रिमूविंग दिस, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि कैसे किया, इस तरह। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ गुड मैट्रिक और बैड थिंग कि आपने क्या किया है, बट जस्ट राइट कि पढ़ के पता चले। इम्प्रूव कोड क्वालिटी बाय रिमूविंग स्मेल्स and doing refactoring, ठीक है। I don't know what smells is, so I would not comment on it if it's a right word or wrong word, not sure,
बट अपने रेज्यूमे को ना थोड़ा कंसिस्टेंट बनाओ। आई सी के कुछ कुछ जगह पे फुल स्टॉप्स हैं, बाकी हर जगह नहीं है। सो मे बी इट्स बेटर इफ यू जस्ट राइट इट और डोंट राइट इट, एंड आई वुड से राइट इट। ठीक है। गुड पॉइंट, 3 पॉइंट में कट टू कट, ठीक है। आई लाइक कि इसने अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 5 किए। मैं यही समझा रहा हूँ कि यू कांट हैव जस्ट वन प्रोजेक्ट व्हाइल ग्रेजुएटिंग फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। यू शुड हैव एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ दिस 8 सेमेस्टर्स। ठीक है। टॉप पे हमेशा आपका FIP होना चाहिए। लेट्स रीड नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर लिंक्स टू द ग्रेप्स। ठीक है। डोंट राइट दिस। एंड इवन आई डोंट सी अ रिज्यूम, यहाँ पे गेटअप का कुछ दिख नहीं रहा, क्लिकेबल लिंक नहीं दिख रहा। डोंट राइट दिस। Hospital management system built using Elephant SQL, PostgreSQL Cloud Service, use Material UI, use JWT, implemented यार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बताओ। मतलब लिख लिया कि आपने चारों पॉइंट्स टूल का लिख लिया, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन लिखा यूजिंग ईमेल वेरिफिकेशन, बट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था? तो इसको नहीं लिखा। मल्टी फैक्टर आप क्यों लगाते हो? फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशंस। प्रॉब्लम तो लिखो, प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया? और क्या ये मेडिकल पॉइंट, राइट? तो आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है ना। प्रोजेक्ट का नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, विच इज फाइन। प्रोजेक्ट का नाम कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट जस्ट मेक श्योर कि इट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो पहली लाइन में। Maybe you can just gather up these technologies in one point and maybe write a problem statement and how did you solve it in 2 points. Restaurant reservation, React Native SQLite, ठीक है. Allow user to go through different menus items available at restaurants. This is not a highlight. Use SQLite database for managing data access across the application. Allowed user to search and filter food items using keyword searching. Keyword searching and these mechanisms are fine. It's good if you write it. ठीक है. बस समझ आ रही पढ़ के क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. बट वन थिंग डायरेक्ट दे अंडरस्टैंड ना कि ये क्या कर रहा है। रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, जाहिर है कुछ रिजर्वेशन कर रहा होगा, बट ये कुड बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव और मे बी वेल रिटन अबाउट इट कि भाई ये काम क्या कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स माय ओपिनियन कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करो, बुक करो। बुक करो जो टिकट बुकिंग एप्लीकेशन, ये मैं कह रहा हूँ ना, इट्स अ टिकट बुकिंग एप्लीकेशन, राइट? सो दिस इज ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? बट अगर आप ऑन अ बिल्ड ऑन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, नाइस, दैट अलाउज कस्टमर्स टू साइन अप एंड बाय अवेलेबल टिकट्स, ठीक है, दैट इज वेरी नाइस, वेरी गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। यूज रिएक्ट फॉर द फ्रंट एंड एक्सप्रेस जेएस, दिस यूज mongoose, email authorization, ठीक है, this project is fine, sarcasm detection, python jupyter notebook, मुझे नहीं पता, आपने शायद लिंक डालने के लिए डाला हो, बट डोंट राइट jupyter notebook, you don't have to write it, ठीक है। To detect sarcasm in headlines using syntax and semantic meaning, yes, semantic meanings is something that describes how you solve the problem, ठीक है, and problem statement is also there to detect sarcasm, to find out accurate and relevant features from the document, to classify whether it's sarcastic or not. Very good. Train uh, trained the model using support SCMs as the data was annotated. Don't write data was annotated, and discuss some more methodologies. This can't be just only, और accuracy वगैरह भी लिखो कि भाई इसमें क्या accuracy वगैरह अचीव हुई। Calculated accuracy से doesn't matter ना, क्या फर्क पड़ता है? Just write कि what the accuracy was, what did you beat? You reached the top 10%, you reached top 1%. Blood donation management system, C#.NET 7.0, an application built on MVC architecture, ठीक है। ठीक है। अब अगेन इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, बुकिंग अपॉइंटमेंट्स वगैरह शायद इसको पहले ले आते तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाती है। ओवरऑल माय इंप्रेशन ऑन दिस रेज्यूमे इज गुड, इट्स वेल रिटन, हाउएवर इट नीड्स इंप्रूवमेंट, सो आई वुड रैंक दिस एज 5 or 6 out of 10, एंड सो फार दिस इज द फाइनेस्ट रेज्यूमे आई हैव सीन इन द लास्ट 2-3 रेज्यूमे। बट अपनी ना थोड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करो, पढ़ के समझ नहीं आ रहा। एंड इवन इफ यू थिंक ना, जैसे sarcasm detection, if I read ना, someone tells me कि यार there's a project of sarcasm detection, I would go to the Kaggle, right, and write sarcasm detection, and I would find thousands of projects. So what makes your project unique is the accuracy that you got, right? कि आपने कितने हद तक बाकी solutions को beat किया। इसी तरह योर एक्सपीरियंस इज वेल रिटर्न, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। जस्ट फोकस ऑन, इसमें सारी लिखने की जरूरत नहीं है। स्किल्स आर फाइन, सर्टिफिकेशंस आर फाइन, लिंक डाल दो सर्टिफिकेशंस के, जो जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड resume, just needs couple of changes. This format is fine, but this format is common. I have seen a lot of formats like this, no problem with that, चलेगा। सैयद Arslan. Sayyid Arslan, full stack developer. Oh my God, this is a resume that we discussed with Hassan Bhai as well. Okay, and his resume pe we have some things to add. Number one page resume, which is nice, and that is, let's see, ठीक है, फोन नंबर वगैरह ठीक है, बट ये देखो वही मैं कह रहा था ना, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। डोंट राइट एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, दिस योर फर्स्ट नेम इज फाइन, राइट? ओके, फुल स्टैक डेवलपर, ओके।
forward thinking software developer with a background. ठीक है, you are a forward looking software developer with a background full stack. ठीक है, responsive, writes high quality code and creates an exception. I'm currently seeking opportunity. This is not, ये सही नहीं है, ये लाइन हटा दो. Because you write full stack developer and you're applying to company, so that automatically means you're seeking opportunity. No need to reiterate. But ये क्या डाला हुआ है? Like, where did you even get this idea from? I'm sorry, like to be being bluntly honest, but where did you come this idea from? Where did you get this idea? कि यार मैं एजुकेशन में तस्वीर डाल देता हूँ, आई पाइथन में ये डाल देता हूँ. मैन, व्हेन यू प्रिंट दिस ओवर ना, दिस लुक्स लाइक द वर्स्ट थिंग. ठीक है, दिस पाइथन का कैरेक्टर, एनयू के कैरेक्टर्स, कम ऑन मैन, जस्ट रिमूव दैट. ठीक है, एजुकेशन वगैरह सिंपल. जिस भी अगर ये आपने लिंक्स खुद डाले ना, आई एम श्योर ये आपने खुद नहीं डाला होगा. आपने कोई फॉर्मेट यूज किया होगा ओल्ड लीफ पे, और वहाँ पे आपने कोई इमेजेस वगैरह अपलोड किए होंगे, बट यू शुडंट डू दैट. एंड चेंज योर टेम्पलेट इफ यू थिंक, क्योंकि इसमें वो वाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा है. मे बी मैं बहुत ज़्यादा जूम करके देख रहा हूँ. इवन इफ द रेज्यूमे इज फाइन, देन लोगोस आर्ट. ठीक है, एजुकेशन आपने डाल दिया, बट बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखो ये मैं कह रहा था कि एनयूसीएस पूरा लिखो. बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौन सी डिग्री है? Just get back to me if you know what is this degree of computer. If this is right, which I'm sure it isn't, then remove this. Software engineering को भाई कैमल केस में लिख लो, 2020 से प्रेजेंट भी ठीक है, बट मंथ भी तो लिखो ना आपने, कौन सा मंथ? बिकॉज एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टिंग कि उनको कब हायर करना है. So they should know कि when you are graduating. एंड हाउ डू दे नो कि when you are graduating? अगर आप लिखते हो कि भाई मेरा अगस्त का फॉल है, तो आइडियली you should complete in June, right? Unless if you have some other reasons कि आप पहले या बाद में करते हो. Work experience, you are writing PHP developer at Exatech. ठीक है, मे बी यू कैन जस्ट एक्सचेंज एक्स्ट्रा टेक को पहले ले आओ, पीएचपी डेवलपर पहले ले आओ, बाद में ले आओ. आई वर्कड एज अ पीएचपी डेवलपर इन दिस स्मॉल. व्हाई डू यू इवन से कि दिस इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस? इवन इफ इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस small, you don't write it the small software house. When you are explicitly telling that you work for a small software house, then मतलब इसकी वर्थ तो गिर गई ना अपने Exatech की. And now I won't be thinking very high of this software house. Fix PHP and design issues. What issues? ठीक है, which PSP issues, which bugs in their websites? How did you solve it? You worked for 3 months and that's the only thing you did? No, you must have done something else as well. Just write it down. इसको points में break down करो. Just show gets up points. You just have like stacked it together. थोड़ा सा work experience डाल दिया. No man, काम जान छुड़ाने वाली नहीं करो. This resume should be the ideal point कि आपको कैसे करना है अपनी आप. How do you look for a next position? तो just write it down in a proper manner. 3 points में लिखो, descriptive forms में लिखो. And your when your format is like this, your point shouldn't be like पूरे पूरे दो paragraphs के. Okay, I have worked, obviously that shows when you are writing it in your resume. So yeah, और I have लिखने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट लिख दो वर्क एज अ PHP डेवलपर. PHP डेवलपर और PHP डेवलपर ये भी रेपिटेटिव हो गया ना, यहाँ से आ गया, ये तो पूरी लाइन ज़ाया हो गई. तो आपका सिर्फ काम ये है कि PHP डिजाइन इशूज वगैरह फिल किए. इसको ना नहीं आता ना समझ, चैट जीपीटी से ब्रेक डाउन करा लो अपने सारे स्टेटमेंट्स, देखो कि भाई आपने क्या क्या काम किया, और चैट जीपीटी को दे दो, बोलो भाई मैंने ये काम किया, दिस डिवाइड मी टू 3 points. एंड हाउ द 3 points शुड बी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले लिखो, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्या टेक्नोलॉजीज यूज करते हुए किया, ये सारी चीजें लिखो. अगर मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व की तो उसको अलग अलग पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर दो, बट 3 से 4 पॉइंट्स आर मोर देन एनफ. टेक्निकल स्किल्स, लेट्स सी. अच्छा, आइडियली मुझे अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना खास नहीं लग रहा, बिकॉज द वे यू हैव प्रेजेंटेड है, आई वुड हैव प्रीफर्ड के प्रोजेक्ट्स को पहले ले आओ. ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के बाद, रादर देन स्किल्स. प्रोजेक्ट पे भी हम आए नहीं, बट स्किल्स देखते हैं. टेक्निकल स्किल्स, jQuery. ठीक है, नो प्रॉब्लम, द टेक्निकल स्किल्स आर फाइन. आई अगर मुझे ज़्यादा अगर और अच्छे तरीके से लिखना होता तो आई वुड हैव लाइक रिटर्न के प्रोग्रामिंग लिखता है, प्रोग्रामिंग के आगे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है, गेट लिखता है, फिर गेट के आगे सारे लिखता है, गेट गिट लैब, ये सारी चीज़ें. एंड गेट गिटअप इज, ठीक है, गेट स्लैश गिटअप कर दो यार. डॉकर वॉकर जो भी आपको चीज़ें करनी है वो कर दो. इस तरह भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट दिस फाइन. सॉफ्ट स्किल्स आर समथिंग मे बी यू शुड राइट. मतलब मुझे पर्सनली ठीक लगती है सॉफ्ट स्किल लिखना, बट व्हेन आई टॉक टू हसान भाई, सो दिस इज जस्ट हिज पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग. he feels कि when you're applying for a position कहाँ पे, तो the companies like implicitly wants you to have these soft skills, so that's something that you shouldn't be writing. मतलब ये आपके पास होनी चाहिए. तो it doesn't make you a special candidate if you have them, but it will make you special if you don't have it, and in a negative manner. Licenses and certification. License का मतलब होता है very something you have like a very prominent license. You आपके courses पढ़ते हैं, web engineering.
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस, कोई वेब इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेशन थी या वेब इंजीनियरिंग का कोर्स था। अगर आपने वेब इंजीनियरिंग का कोर्सेज किया ना, तो दैट डजंट गो इन द हेडिंग ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है। इशूड सितंबर, लिंक डाल दो ना, अगर सर्टिफिकेशन है कोई नहीं है, सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल्स के लिंक नहीं है, पिक्चर खींचो अपनी सर्टिफिकेट की, गूगल ड्राइव पर डालो, उसके लिंक अटैच कर दो। पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, क्लावर प्रोग्रामिंग, लर्न इंटरमीडिएट कोर्स स्क्रिम्बा, ठीक है। दिस लुक्स लाइक ना, यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल आईडी डाली हुई है, क्रेडेंशियल आईडी ठीक है डाल दो, बट दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। क्रेडेंशियल आईडी डाल दो और उसको ना क्लिकेबल लिंक भी बना दो। Apart from this, these ये तो क्या है ये, I don't understand. If you do a beginner course, then you don't call it as a license. Just maybe write certifications, और वो भी इतनी सारी सर्टिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। Just one line for certifications रहना। अब जैसे मैंने लास्ट resume में दिखाया था, if you don't know, just go back to the resume and see कि उस बंदे ने कैसे अपनी certifications लिखी थी। It just feels like you are utilizing the space that you have. Languages, man, come on. Languages are not necessary when you're applying for an in Pakistan job. Everybody should know that you must know Urdu or these languages. English में ना I feel कि English में fluent, अगर आपने कोई IELTS वगैरह के result किया हो ना, तो you can bracket में write कि भाई I'm C1 expert, I'm C2 expert, but languages are not needed. I don't understand. You shouldn't have that much space in your resume to write languages unless you apply for a foreign position. ठीक है, अगर आप बाहर के लिए apply करते हो तो फिर then it becomes necessary. Make sure. Our dynamic website created with HTML, individuals will be able to scratch. ये जो second point है ना, this is your problem statement, इसको पहले ले जाओ और इसको थोड़ा rewrite करो, इसको break करो, ठीक है। The site also record the complete information regarding information record करके क्या करता है, process करता है, filter करता है, reports बनाता है, suggest करता है, what does it do, तो ये लिखो। और which one is your FIP application, I don't get it. If this is your FIP application, explicitly write it कि भाई this is your FIP, but looks like it is not, otherwise ये आपके पास अगस्त से स्टार्ट होना चाहिए एंड दिसंबर तक चलना चाहिए। आपका FIP इसमें नहीं लिखा हुआ। कोविड एप्लीकेशन ट्रैकर इज बिल्ट ऑन फ्लास्क, enabling doctors blah blah blah, yeah, the other functionalities for doctors to generate and forward results for patients to view the reports. The application is based on classification model कौन सा, that categorizes case of normal covid, ठीक है। एक्सरे इमेजेस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह क्लियर है, बट just maybe some write some accuracy कि यार कितने accurate था solution to make your stand out. Overall resume is, I think you have to, number one, change your template or maybe revise this template. This entire summary is not needed, especially this part is not needed, ठीक है। Or writes high quality code. So yeah, maybe I can agree to that if you have space, it's fine. But yeah, ये picture शिक्र हटाओ, ये education वगैरह पे I don't think it's necessary. You should particularly remove this. और work experience को थोड़ा और अच्छे से करो। I don't find a line कि यार कौन सी चीज़ कहाँ खत्म हो रही है। मे बी यहाँ पे अपना कोर्स वर्क लिखो जो रेलिवेंट है, इस तरह की दो तीन चीज़ें लिख लो। एंड लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स को बढ़ाओ भाई, प्रोजेक्ट्स 4-5 होने चाहिए आपके। इफ़ यू डोंट हैव वेरी मच, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं है, इट्स फाइन। वर्क एक्सपीरियंस एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, इफ यू हैव वन एक्सपीरियंस इट्स फाइन। इवन इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है चल जाएगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट एटलीस्ट सेल योरसेल्फ इन अ राइट मैनर, राइट। एंड यू हैवंट डन इट इन दिस resume yet. So this is, again, I'm sorry if I was super honest, but I feel that there is a need to improve your resume. Do this, I mean, I don't know who that is, but let's see. Okay, now overall impression, this resume is good. One page resume है, text भी मुझे evenly distributed लग रहा है। और जो मैं फर्स्ट में कह रहा था ना कि एब्रीविएशन नहीं है, तो जैसे एक में NOV लिखा हुआ है, एक में पूरा नवंबर लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट दिस डजंट हैव इट, ठीक है। एंड ओके, नाउ लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। एक बार है ना, इसको प्रिंट करके देख लेना, हाउ डज इट लुक्स ऑन द प्रिंट, क्योंकि आई एम श्योर कि पीछे वाला ब्लैक है, ऊपर वाला वाइट। अगर प्रिंटिंग सही नहीं है तो फिर अबाउट मी, आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। स्पेस नहीं है, आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू स्किल्स। इज इट नेसेसरी, मतलब आज कुछ आई डोंट नो, ओके। एजुकेशन, पास नेशनल यूनिवर्सिटी की जगह ना पूरा लिखो, NUCS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, एंड राइट बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, डिपेंड्स क्या आपके स्पेस कितनी। 3.39 आउट ऑफ 4 इज फाइन, इट्स फाइन। करंट GPA कुछ नहीं, करंट CGPA कुछ नहीं होता, CGPA इज ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव GPA, तो ये आपको करंट ही बताता है, सो यू डोंट हैव टू राइट दिस। एडवांस, अच्छा, कॉलेजेस एंड स्कूल आर नॉट नेसेसरी, ठीक है। ओके, अनलेस यू हैव डन फ्रॉम बाहर से कहीं किया हो,
Your grades are good. I'm not saying it's not a good year. These are very good grades. But yeah, colleges. Personally, I feel colleges and schools are like shouldn't be there on your resume at least. Skills, intermediate, C, C++, Python, HTML, PHP, SQL, MS, and MSC Word, MS Excel. These are not skills. Okay, HTML, CSS को साथ लिख लिया करो, ठीक है? But these skills are very less. If these are all your skills, then you need to gain some more skills. And I'm sure you know a lot of more skills than these. ठीक है, आपने यहाँ पे React, JavaScript लिखा ना, maybe don't write intermediate or beginner ऐसे separate, just make it together. क्योंकि अब थोड़ा बेहतर लगेगा अगर आप React, JavaScript, Adobe Illustrator लिख दो। MS Access यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मे बी डेटाबेसेस में आप डाल सकते हो कि भाई आपको SQL आता है /access। आप अगर अपने कोर्सेज पे भी ध्यान दो ना, कि जो आपने 8 जितने कोर्सेज पढ़े होते हैं 40, उसमें भी आप कुछ स्किल्स निकाल सकते हो। डेटाबेस आपने पढ़ा है, SQL की स्किल्स हो गए आपके पास, ठीक है? आपके पास और भी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हों। आपने वेब इंजीनियरिंग पढ़ी है, उसमें आपने कोई फ्रेमवर्क पढ़ा होगा। आपने क्लाउड पढ़ा है, उसके अंदर कोई आपने फ्रेमवर्क पढ़ा होगा। आपने डेवऑप्स पढ़ा है, उसके अंदर आपने कुछ पढ़ा होगा। तो राइट दोस्त, ठीक है? इवन इफ यू नो द बिगिनर लेवल हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है ना कि हाउ दोस वर्क, यू कैन राइट इट डाउन। अंडर ग्रेड में आपको इतने सारे कोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर यू पिक दोस्त जो कि आपके प्रोजेक्ट्स, आपके पोजीशन से रेलिवेंट है। आई कैन नॉट सी व्हाट इज द पोजीशन दैट यू अप्लाइंग फॉर। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ, इट्स फाइन। लेकिन कहीं ना कहीं से पता चलना चाहिए कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। आई पर्सनली यूज टू फील कि इट्स नेसेसरी, बट नाउ माई थॉट हैव चेंज। आई फील के if you write it, it's fine, it's good. Even if you don't write it, then it should be able to somehow apply। क्योंकि होता ही है कि ना, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो जब सॉर्ट कर रही होती हैं तो यूज सम टूल्स, तो उसमें ना कीवर्ड बेस्ड मैचिंग होती है। तो दे जब भी अप्लाई करो तो लिख लिया करो कि विच पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ, या आपका अबाउट उसको रिफ्लेक्ट करे। मैं अबाउट से ज़्यादा लिख लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। इफ यू हैव सम स्पेस इन योर रेज्यूमे दैट व्हिच पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, ऑलवेज डू दैट। क्योंकि ना होता ये कि इफ योर resume is, let's say, a mix, because in my case when I was applying for development jobs, ठीक है, I was not good in development, I was good in AI part, right? तो अगर मैं अपने उसमें लिखता था AI, अगर मैं नहीं लिखूं, मैं किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो लुकिंग एट माई रेज्यूमे आई वुड इम्प्लिसिट कि यार इट्स एन अप्लाई फॉर डेटा पोजीशन, एंड दे वुड जस्ट डिस्कार्ड माई रेज्यूमे। बट व्हेन आई वुड राइट कि यार इट्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन, दे वुड लुक एट इट कि यार इसने ऐसी क्या बात कर रहा है इंजीनियरिंग वाली, अगर इसके रेज्यूमे डेटा वाली है तो। there's a different science के how to make these resumes, but write it, ठीक है? Honors and awards, runners up in speed programming, good. लिख लो second out of how many teams? Dean Lees of Honor, Spring 22, Spring 2021, good. One academy award for academic excellence, ठीक है, it's nice, good to see. But ये 2 दफा लिखा है आपने, एक ही दफा लिख लो, it's fine। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, like lines next by now। Volunteering, yeah, volunteering, you can volunteer as tea session coordinator is also, ठीक है? Volunteering is not required। Volunteering is, I don't think it's a very helpful tool in resumes, because nobody's looking for a volunteer position. They are looking for some positions, right? So if you have something else to replace this with, please do so। Certifications, all the certifications I couldn't see। Person projects, front end development, successfully design and develop landing pages using HTML is a part of my assignment। Assignments doesn't fit into your personal projects। अच्छा, I wasn't expecting this, ठीक है? Experience को पहले लेके आओ, ठीक है? Because your experience is better than personal। I haven't read your personal projects yet, but अगर आपका पहला प्रोजेक्ट अगर ये है ना, तो नंबर 1 इसको हटाओ, ठीक है? ये project doesn't cast a very good impression of yours। So yeah, successful design and develop landing pages using HTML and CSS as a part of my assignment। Maybe if you want to keep it, then just write कि आपने वो प्रोजेक्ट किस पे बेस्ड था, वो किस मतलब उसका आइडिया क्या था, डोमेन क्या था, वेब स्पोर्ट्स डोमेन का था, शिपिंग था, ई कॉमर्स वेबसाइट था, व्हाट इट वाज। एंड इवन इफ इट वाज अ वेब प्रोजेक्ट, maybe just write a functional requirements or non-functional requirements or how did you do that। इस तरह सिंपल इट लुक्स लाइक आपने HTML CSS अपने कहीं पे सीखी होगा ना, HTML CSS को आपने अप्लाई करके कुछ बेसिक लैंडिंग पेजेस बनाया होगा, जैसे index.html, about.html। But people usually are looking for something higher level than that। Your next project looks interesting, let's read that disease analyzer created a machine learning model using Python that predicted the diseases on the basis of various symptoms। अच्छा,
कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल लगाया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी यूज मशीन लर्निंग मॉडल लाइक गॉसियन नी बेस्ड क्लासिफायर एंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, गुड बट यू डिडंट राइट क्या एक्यूरेसी कितनी आई। वी यूज के फुल क्रॉस वैलिडेशन टू इवैल्यूएट द मॉडल। इवैल्यूएशन भी डिस्कस की विच इज नाइस, बट आपकी एक्यूरेसी इज मिसिंग, सो आई एम नॉट श्योर के हाउ एक्यूरेट योर डिजीज एनालाइजर वाज। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज के क्रिएटेड अ मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग पाइथन ना, तो इट्स ऑलवेज पाइथन अनलेस यू नो different languages, right? So maybe just replace that and write के solve the problem or disease analyzer on challenging images using pre-processing or techniques like morphological image pre-processing and thresholdings, इस तरह के ऑर्थो वगैरह, कोई this could be anything. तो problem statement को थोड़ा सी rewrite करो, but this is a better project than your first one, तो maybe bring that up, ठीक है? Hotel management system created a web application of hotel booking management system to reserve and manage rooms. Problem statement is clear. Using the knowledge of HTML, CSS, database कौन सा use किया? SQL is the database itself, right? Sorry, SQL is a programming language, but database आपने कौन सा use किया? Just write which database use. Design the database in ER diagram for the application, not required. It's what you're supposed to do. Better इसको use करो कि आपने क्या क्या बनाया. जैसे कोई ऐसे कंपोनेंट्स बनाए या कोई ऐसा चैलेंजिंग काम था जिसको आपने सॉल्व किया, दैट इट्स वेरी रिकमेंडेबल। और एंड ऑनेस्टली द प्रोजेक्ट है ना, इसके ना टाइमलाइन होती है। अगर आपने नवंबर 22 में बनाया तो वो डज दैट मीन आपने नवंबर 22 में स्टार्ट किया, या फिर डज दैट मीन्स कि आपने नवंबर 2022 में एंड किया। सो यू शुड हैव अ टाइमलाइन कि आपने कितने टाइम में बनाया। दिस ऑल्सो शोज एन इंप्रेशन कि आपने कितने टाइम में यू कैन एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। Sorting visualizer, अच्छा एक चीज आई डिडंट लाइक कि some of your these are in caps, some of these are in camel, so just have it consistent, ठीक है? इसमें full stop वाली गलती नहीं है, so far good work with that. Hotel management system, sorting visualizer, web application with visualizer different sort, yeah, I think आपने उसके लिए किया, algorithms के लिए किया होगा। ठीक है यार, आई फील कि दिस इज योर असाइनमेंट रादर देन आप सॉर्टिंग विजुलाइजर। आपके प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आई couldn't find your FIP नंबर वन। FIP के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप IBT में प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप जो है वो नॉट PPID वाले प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, आप डेटाबेसेस में प्रोजेक्ट बनाते हो। DBMS वाला आपके प्रोजेक्ट कौन सा है? आई फील कि दैट्स योर होटल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? बट इफ यू लाइक डिड यू जस्ट मेक इट यूजिंग HTML CSS? अगर डेटाबेस यूज किया तो बैकएंड क्या यूज किया था, इस तरीके के बारे में कुछ बताते हैं। सॉर्टिंग विजुलाइजर, इट्स एन एल्गोरिथम प्रोजेक्ट्स, dictionary made an electronic dictionary that helps to find meaning of the word designing using assembly language. Yeah, this could be now, I think you haven't explained it very well, but this could be a very good project if you want me to, like if you would have asked me। आप assembly में एक डिक्शनरी बना रहे हो, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी बना रहे हो जो कि वर्ड्स का मीनिंग उठाता है, तो आई एम श्योर आपने कुछ सॉर्टिंग और आपने कुछ रिकर्जन वगैरह लगाया होगा इस तरह। एंड applying recursions and etc in assembly language is a pretty hard thing itself, so you should सेल इट वेल। मतलब 3 पॉइंट्स में लिखो, लिखो कि असेंबली x86 इस्तेमाल किया है, और जस्ट राइट इट वेल। आई एम नॉट श्योर व्हाई यू नॉट एबल टू राइट इट वेल। इफ यू नॉट एबल टू राइट इट वेल ना, जस्ट ईमेल मी व्हाट यू हैव डन, ठीक है? आई मेक श्योर टू टेल यू कि एग्जैक्टली how to write things well. But I'm sure you can do that because आपका overall resume is well structured and you have worked as an AI intern वगैरह भी, so you should be able to like write it well। And personal projects से ज़्यादा ना आप simple लिख दो projects, ठीक है? And projects में अगर आप university के projects include करते हो ना, तो that's a better choice। सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऑफिशियल ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन electoral system, a console application which conducted online election using C++ language, ठीक है? Problem statements clearly C++ we implemented concepts of object programming। ओके, सो इट्स लुक लाइक देयर वाज वन प्रोजेक्ट, वो आपने सी में भी चलाया, C++ में भी चलाया, मतलब दो सेंस से आपने प्रोजेक्ट निकाला। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड इंप्रेशन, राइट? वन C++ लिख लो, इट्स बेटर, ठीक है? प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपने कौन से इस्तेमाल किए? आपने लिखा है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप। कौन से ऊप के प्रोग्रामिंग इस्तेमाल किए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ें, ये बात नहीं कर रहा। मे बी ये बात कर सकते हो, बट यू कैन राइट समथिंग मोर देन दैट कि आपने ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टिव, इस तरीके से चीज़ों के बारे में बात किया आपने। उसके बारे में बात किया, डायनेमिक सेफ एरे के बारे में बात किया है, कुछ भी हो सकता है। एक्सपीरियंस, सी एक्सपीरियंस बेस्ड लैब में यही इंटरनेट इज बेटर, जस्ट पुट इट अबाउ। आई वाज राइट, इसको अपने प्रोजेक्ट से ऊपर लेके जाओ। यूटिलाइज कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स फॉर प्रोफिशिएंट क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोफिशिएंट क्लासिफिकेशन, ये क्या प्रॉब्लम है?
maybe I'll look into that some other time, but I'm not sure of what your problem is. Demonstrated expertise in object detection techniques, how कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं? आपने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस के लिए मॉडल यूज़ किया है, योलो वगैरह यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है? Implemented liveness detection using the media pipe library, incorporating smile and enabling it, ठीक है, it's fine. क्या accuracy है, बस accuracy देख लो. Created a docker file of one of my projects. No, that's not how you should write it. Just सिर्फ लिखो कि ऐसे लिखोगे कि created या dockerize my project to be reproduced on any machine, कुछ इस तरीके से लिखो, that would have been a better choice. आप ऐसे लेते ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के ठीक है, डेब्यूटी, जस्ट एक बार पढ़ लिया करो अपने रिज्यूमे, डेब्यूटी डिजाइन टीम की कराची, कुछ नहीं होता भाई, कराची होता है, ACM न्यूज़ कराची, डिजाइन एंड एडिट पोस्टर्स, दिस नॉट रिक्वायर्ड, ओके, अनलेस Adobe Illustrator वगैरह पे आपने काम किया, I get it. But is this relevant to your position? If not, then maybe you can just explore it. You don't have to include everything. So overall, this resume is fine. Karachi, Sindh, Pakistan, Sindh is not required. Live आपने email तो डाल दिया, आपने अपना GitHub LinkedIn नहीं डाला है. So these are minor things that I should be focusing on. Just correct them, or and good luck. ठीक है. Let's go to the sixth resume. Muhammad Uwais Ali. Okay, one page resume, good. जो ये क्या लिखा है, बैचलर्स इन साइंस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, नहीं भाई, दिस नॉट रिक्वायर्ड, आई एम सॉरी बट दिस नॉट रिक्वायर्ड, दिस आई कैन फाइंड इट हियर, सो इट्स वेस्ट ऑफ स्पेस. जूनियर एट नेशनल यूनिवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. NUCS आपने 2 दफ़ा लिख लिया पूरा, स्पेस भी नहीं छोड़ी यहाँ पे. एनी आई कैन सी इफ यूर 2020 batch, from 2020 batch, and more importantly you must be senior now, right? 2020, so you should be a senior so far, or a passionate student who aspires to grow through my work and experience and eager to learn and develop new skills. No, just remove that, ठीक है, this doesn't explain anything. बहुत ज़्यादा इसको कंट्री कोड से रिप्लेस कर लो, +90 इज ऑलवेज गुड, लिंक्डइन एंड गेटअप आर फाइन, ठीक है, इट्स गुड, बट ये 3 स्पेस से बेहतर है. आई वुड हैव प्रीफर्ड इसको 2 स्पेस में ले जाते हैं, तो इट सेव्स यू स्पेस. एंड आई फील दिस इज माय ओल्डर टेम्पलेट जो मैं कभी यूज़ करता था. राइट कंप्लीट, हर जगह आपने कंप्लीट यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, जहाँ लिखना चाहिए वहाँ आपने ना इसको फुल नहीं लिखा है. तो राइट NUCS कंप्लीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इमर्जिंग साइंसेज फास्ट. बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर का CNS कैपिटल होना चाहिए, 920 प्रेजेंट. कराची हटा दो, ऊपर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दो. एंड इसको ना इस फॉर्मेट में लिखो, कैमल केस में, कैप्स में लिखने की जरूरत नहीं है. कोर्सेज में ना बहुत स्पेस आया हो गई है, इसको या तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग को पूरा लिखो, या एक एक लाइन में लिख लो, ठीक है. या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि ना, ऐसे कोर्सेज जो 2 लाइन में आते हैं उनको एक साथ लिखो, जैसे डेटा स्ट्रक्चर की जगह क्रेडो वेरेडो हटा दो, इसकी नीड नहीं है. आई नो क्रेडो इज वेल रेप्यूटेड बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस. एंड ये आपने क्या लिखा है, 202, आई एम श्योर यू मीन 2020 बट you have Mr. Zero Bro. Work experience, .NET apprentice, Shakespeare. Mm-hmm. Karachi, okay. Achievement as develop and execute test programs to validate correctness and reliability. कौन से test programs? ये mention absent है. Develop custom middleware functionality such as authentication and login to optimize. ये वाले ये ना ये आपकी problem है कि भाई आपने optimize करना था. This is good. ऑथेंटिकेशन कुछ टूल्स वगैरह का नाम भी अगर यहाँ पे होता है ना, तो अच्छा लगता है कि कस्टम कौन से ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिंग है. डिजाइन एंड डेवलप API यूजिंग माई स्किल्स, दिस नाइस. डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग विद डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अगर लिख लेते कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो तार बड़ा भी बेहतर है. आई लाइक इट, ही सेंटेंस में डिकम्पोज है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट यू डिड, हाउ यू डिड एंड व्हाट वाज योर रोल. इट शेक्सपियर की पहले भी हमने रिज्यूमे में देखी थी, बट इट्स मोर रेलिवेंट कि बता रहा है कि आपने .NET अप्रेंटाइज की जॉब की है, ठीक है. ऐप डेवलपमेंट इंटर्न सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है. तो आई फील के दिस इज अ गुड कि आपने अब तक 2 इंटर्नशिप्स कर लिए हैं, ठीक है. आपने इधर 5 पॉइंट्स लिखे, मे बी दैट्स ओवरकिल बट लेट्स रीड. कराची की कैपिटल, अचीवमेंट्स, टास्क, 2 लिखने की जरूरत नहीं है. आई नो दिस रेज्यूमे, जस्ट टास्क लिख लो, या ना भी लिखोगे इसको मिटा दो, बल्कि मुझे वैसे याद पड़ा, मेरे पास भी ऐसा टेम्पलेट हुआ करता था. develop web applications using ASP.NET 6, ठीक है. adhering to best practice in the code structure. अच्छा, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द कोड स्ट्रक्चर का कोई टेम्पलेट है? जैसे पाइथन की जब आप प्रोग्राम करते हो तो उसके लिए पेप 8,
पेप इट इज अ स्टैंडर्ड, उसको लोग फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं। सो इफ देयर इज समथिंग तो उसको लिख लो, अगर नहीं है तो इट्स फाइन। इम्प्लीमेंटेड रेस्टफुल वेब एपीआईज एनहांसिंग डेटा एक्सचेंज एफिशिएंसी, गुड। क्वांटिफाई कर दो उधर कि कितने परसेंट्स आप इंप्रूव कर रहे हो, या कोई टाइम फास्ट कर रहे हो, जैसे 10 मिली सेकेंड से आप जो है ना वो 5 मिली सेकेंड पे ले आए, समथिंग लाइक दैट। यूटिलाइज एसक्यूएल सर्वर फॉर डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग रिलेशनल डेटाबेसेस यूजिंग डेटा इंटेग्रिटी एंड परफॉर्मेंस। हाउ यूटिलाइज एसक्यूएल सर्वर, लेकिन किस तरीके से किया, इसको भी थोड़ा लिख लो। Contributed to front end development by creating responsive UI using Flutter, nice। कोई फ्लटर के खास पैकेजेस हैं, इफ देर इज तो इंक्लूड देम। या कोई ऐसी फ्रंट एंड में आपने चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में आपने कोई लॉगिन और ऑथराइजेशन के अलावा के पैनल्स बनाए हैं, तो जस्ट राइट डाउन कि यार मैंने जो है वो शॉपिंग पैनल बनाए या पेमेंट गेटवेज बनाए, इस तरीके से कुछ लिख दो। असिस्टेंट इन डेटाबेस डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन लेवरेजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क को टू मैनेज डेटा इंटरेक्शंस। ठीक है, दिस इज फाइन, बट 5 पॉइंट्स की नीड नहीं है, 3 पॉइंट्स आई फील इट्स इनफ, मे बी 4। जिस रीस्ट्रक्चर दैन कि आपने डेटाबेस की बात यहाँ पे भी की है, और डेटाबेस की बात आपने यहाँ पे भी की है, ऑप्टिमाइजिंग आरडीएमएस। आई नो कि दीज आर चेंज, बट जस्ट मेक श्योर कि ना जब डेटाबेस की बात करें तो एक ही पॉइंट में आप दोनों की बात कर लो। आपने फ्रंट एंड पे भी काम किया है, आपने जो ना वो बैक एंड पे भी काम किया है, आपने फ्लटर पे भी काम किया है, और आपने रेस्ट एपीआईज वगैरह पे भी काम किया है, विच इन माय ओपिनियन कम्स अंडर द बैक एंड, राइट। ठीक है, अगर पहला पॉइंट ये होता है ना कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपकी, कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि आपको ऑप्टिमाइज करना है, ये करना है, वो करना है, इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ होता तो उसको ऊपर ले जाओ। ब्रिंग योर टेक्स्ट बिलो, मतलब थोड़ा सा नीचे ले आओ, इस तरह। बट दीज इंटेंशंस आर नाइस ओवरऑल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नाइस। स्किल्स C++, पाइथन, पाइथन का पी कैपिटल, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट भी आई एम श्योर कैस कैपिटल होता है, जो सर्च HTML CSS, माई स्क्यूएल डॉट नेट ऐसे नहीं लिखते, आई थिंक एंड इस तरह लिख सकते हो आप। तो मसला कोई नहीं है, लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का एक फॉर्मेट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, ठीक है, इज अ स्किल, बट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आई वुड रादर प्रीफर कि यहाँ पे अलग स्किल्स लिखो, जैसे गिटहब इज मिसिंग, ठीक है, गिटलैब अगर आता है तो वो भी इज मिसिंग। अगर आपने यहाँ पे काम किए इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे, डेटाबेसेस पे, माई एसक्यूएल एसक्यूएल और ये सारी चीज़ें, तो दीज आर माई एसक्यूएल लिखा हुआ है, बट एसक्यूएल सर्वर इस तरह की चीज़ें मिसिंग है। यू कैन राइट मोर स्किल्स, आई थिंक स्किल्स है ना वो 4 कॉलम, 4-5 तक जानी चाहिए। एंड विद वो जो वाकई में है, ओके। पर्सनल प्रोजेक्ट्स में आप जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम एप्लीकेशन आपने बनाया है, FIP कहाँ है इसका? FIP टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, 2 महीने का प्रोजेक्ट, क्रिएट अ बैंकिंग एप्लीकेशन along with 2 members, this is about resume is about you don't have to write कि it's about 2 more members, it's not necessary। वो अपने resume में खुद लिखेंगे, just don't sell their resumes on their behalf in your resume, right? Just make sure कि you write के created a banking application, but वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, पेमेंट गेटवेज कर रहा है, कुछ एज अ यूनिक काम, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा हो ना, एवरी प्रोजेक्ट हैज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो लिखो rather than just writing कि you create a banking application, you can't create a complete banking application, right? Even if you did, तो उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के बारे में लिखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, इस तरह के बारे में लिखो। ई कॉमर्स स्टैंड डेटा, द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू हेल्प द स्टूडेंट रिट्रीव आइटम्स बेस्ड ऑन द कीवर्ड सर्च है, तो कौन सा मैकेनिज्म्स को यूज़ किया था आपने, क्या किया था, कुछ इसके बारे में लिखो। आई कैन नॉट रियली कॉम्प्रिहेंड कि इसमें क्या टेक्निकलिटीज यूज हुई हैं, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है, आपने इसको फैच करना है, बट व्हाट टेक्निक डिड यू यूज, हाउ दिस प्रोजेक्ट वाज स्पेशल, हाउ मच यू आर एबल टू अचीव, ये सारी चीज़ें लिखो। और ATM बनाया अपना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, द प्रोजेक्ट वाज बिल्ड यूजिंग assembly language, वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर assembly language। XT6 नहीं होता, 8086, but it's fine. The project is a console based where we try to replicate ATM। देखो आपने कहा है कि we try to replicate ATM as close as possible. This is not your goal. Your goal is to ATM आपने बनाया है to include certain modalities such as आपने आपने डिपॉजिट मशीन बनाया होगा, आपने विड्रॉल मैकेनिज्म बनाया होगा, आपने मनी सेंड का ऑप्शन बनाया होगा, आपने कार्ड एक्टिविटी का ऑप्शन बनाया होगा, बहुत सारा ऑप्शन बनाया, तो जस्ट राइट देम डाउन। एंड अगर आपके पास गिटहब के लिंक्स पे यहाँ है तो डालोगे। होम ऑटोमेशन सिस्टम, थ्रू आउट द टेक्नोलॉजी वी कैन कंट्रोल द बल्ब्स वी आवर फोन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वी आवर फोन। मतलब किया कैसे, ये मुझे समझ नहीं आया। ये समझ आ गया कि कर क्या रहे हैं, बट किया कैसे ना ये समझ नहीं आया। तो कुछ ऐसी चीज लिखो, ऐसे कीवर्ड्स लिखो जिसके दौरान, बिकॉज समटाइम्स दोज कीवर्ड्स आर डिटेक्टेड इन द फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स ऑफ रेज्यूमेस। सो प्रोजेक्ट्स ठीक है, प्रोजेक्ट्स आई एम इम्प्रेस्ड बाय द प्रोजेक्ट्स, बट यू हैवंट रियली रिटन द
प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसको आपने किस स्मार्ट, ऐसे क्या स्मार्ट तरीका लगाया है, अगर यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, वो भी तो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, on C++ language. There is a management system tells the number of parking available. अच्छा, सर्टिफिकेशन में प्रेजेंट नहीं लिखा करो, सर्टिफिकेशन shouldn't take you very long. अगर आप एक साल से सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो, just think about it. These specialize in health build and train unit of architecture. अच्छा, maybe you don't have to explain these certifications. न्यूरल नेट पे डीप लर्निंग पढ़ के समझ आ रहे हैं कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, और एटसेट्रा आपने ई यहाँ पे गायब हो गया। इंट्रोडक्शन टू पाइथन फ्रॉम बूट कैम्प, सर्टिफिकेशन के लिए इतनी जगह वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट नेम ऑफ सर्टिफिकेशंस आर फाइन, ठीक है। और ठीक है, बट इसकी जगह ना कुछ और लिखो, स्किल्स को थोड़ा बढ़ाओ, पर्सनल प्रोजेक्ट्स को अपना थोड़ा लेंदी करो, लाइक लेंदी से मुराद है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह डालो, वर्क एक्सपीरियंस और योर फाइन, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई हैव सेड अर्लियर। resume says fine, the template is fine, I think this resume can make places if you just added the few details I just mentioned. So far 7 resumes. मोहम्मद राफी, या रेज्यूमे का नाम ठीक कर लो। अंडरग्रेड कंप्यूटर साइंस, अंडरग्रेड लिखने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर साइंटिस्ट इज फाइन। कंप्यूटर साइंस, ये सेम रेज्यूमे अभी मैंने पहले भी देखा, तो दिस नंबर 2 रेज्यूमे राइट। कंप्यूटर साइंस और ऑप्शन पाइथन एक्सपर्ट, नॉट नॉट नीडेड। लिख भी रहे हो तो थोड़ा पर्सनलाइज करके लिखो कि आप कैसे ब्रिंग करोगे, जैसे कि विद माय डाइवर्स एक्सपीरियंस इन दिस आई कम अलोंग दिस। So I don't have a problem with writing objectives, but I feel कि if you're writing it, ना just make sure you sell yourself well. ईमेल ठीक है, कराची पाकिस्तान ठीक है, गिटअप भी ठीक है, फ़ोन नंबर भी ठीक है, कंट्री कोड डाल दो, बट ये लिंक्डइन में एक्स्ट्रा ये नहीं होना चाहिए। जस्ट रिमूव दीज एक्स्ट्रा एंड्स, मोहम्मद राफी तक होना चाहिए। मैंने सेकंड रेज्यूमे में बताया हाउ टू डू दैट, जस्ट गो एंड वॉच दैट पोर्शन अगैन। BS, your GPA is nice but your coursework is not there, तो write some coursework जो बताए कि आपने कौन से courses किए हैं जो that are relevant to this position of computer scientist, ठीक है। Not required bro, you shouldn't write this, इसकी ज़रूरत नहीं है। Nobody cares about your matriculation enter when you're in university. Projects आपने पहले लिखे हैं, that means कि it's an highlight. If it is, let's look. Search engine based Boolean retrieval model, good name. ठीक है, आपने ना पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया है, विच इज़ गुड, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, सर्च इंजन कैन से बूलियन, और इसको ना 2 या 3 पॉइंट्स में डिवाइड करोगे, हाउ डिड यू सॉल्व। यहाँ पे आपने इतने सारे टूल्स का नाम लिखे ना, तो आई थिंक इन टूल्स का नाम को यहाँ से हटा के ना जस्ट लिखो कि आपने उनको यूज़ कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटेड अ बैक एंड ऑन फ्लास्क एंड फ्रंट एंड यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, राइट। एंड कोई ऐसा मैकेनिज्म यूज किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन में, व्हाट डिड यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड व्हाट वर द टेक्स्ट यूज। तो आई थिंक इसको 2-3 पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हो। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इक्वेशन सॉल्वर, दिस इज योर NC प्रोजेक्ट, ओके। Problem written in Python which takes the expression and relation parameters and input gives the result in the tabular form. Problem can solve bisection regular files, ठीक है। ये इसको 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हो, 1 पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, और उसको 2 पॉइंट में ब्रेक कर लो। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्रेस HTML, और इसके डेट्स भी लिख लो, ये प्रोजेक्ट्स कब किए आपने, ताकि थोड़ा आइडिया होता है। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और देखो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो गई। ऑनलाइन पेमेंट मेथड ऑल्सो इंटीग्रेट किया, ये एक सेपरेट पॉइंट हो गया एडमिन साइड के। और ये टेक्नोलॉजीज को आपने कहाँ पे कैसे यूज़ किया ना, ये बताओ कि एडमिन कैन हैव अ डिफरेंट, दे कैन फैच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेसेस, इस तरीके से। सॉर्टिंग एनालाइजर, web based application that is used to sort by sort, I'm sorry, step by step sorting of elements. User can list elements by uploading a text file to the application, this is nice, but simple HTML CSS and JavaScript is not enough, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करो। देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन इन दीज पैराग्राफ्स, जस्ट 2-3 पॉइंट्स में ब्रेक करो। और टेक्नोलॉजीज का वेल यूज बताओ कि HTML CSS बहुत रेपिटेटिव हो गया और इट्स वेरी कॉमन। HTML CSS लाइक
the basic thing that you learn, right? So if you have gone beyond that, just write it. If you haven't, just write it. क्या है, मैंने HTML CSS ये लैंडिंग पेजेस बनाए थे, एंड बैकएंड पे मैंने जावास्क्रिप्ट यूज किया था, और ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ये लगे हुए हैं, ये मैंने खुद डिजाइन किए। सो द खुद डिजाइन किया वाला पार्ट इज समथिंग दैट इज यूनिक टू यू। वर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन डेवलप, 2 पॉइंट्स बहुत कम है, हमेशा 3 पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम भी 3 पॉइंट्स होने चाहिए। मीन दैट इज रिकमेंडेड बाय द टेम्पलेट जो आप यूज कर रहे हो ना। मैं भी, मेरे पास भी रह चुका है रेज्यूमे टेम्पलेट। Partner with team members to learn the best practice. So you partnered and you learned. How does it help the company that you work for? It didn't. Use ASP.NET JavaScript SQL Server to develop new applications. कौन से new applications? Just write them down. और क्या क्या काम किया वहाँ पे? आई डोंट लाइक दिस वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको थोड़ा रिराइट करो, इससे बताओ क्या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपने किन किन चीज़ों पे काम किया है, कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेशंस में यूज़ किया है, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो आपने लिखी हुई है ना, जो तीन, इसको आपने कहाँ पे इम्प्लाई किया, और उसको थोड़ा बेहतर तरीके से बताओ, उसका फ़र्क क्या आया, हाउ डिड यू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सर्टिफिकेशंस में आपने अच्छा खासी जगह लगा दी है, वेल इट शुडंट बी दैट। इन दैट के सर्टिफिकेशंस, आपका जितना वर्क एक्सपीरियंस है ना, इतना आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये इसको आप कोने कोने पे लगा सकते थे, पाइथन बेसिक हर सर्टिफिकेशन में नहीं डालते जो आप। दैट इज व्हाट योर लिंक्डइन इज फॉर, या ये सारी चीजें फॉर, वहां पे जाके आप सर्टिफिकेशंस में डाल सकते हो, सारी लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट अचीवमेंट्स, दिस इज टेकिंग अप इट स्पेस विच कैन बी यूटिलाइज इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने 4 प्रोजेक्ट बताए, इट्स गुड। आप 4 प्रोजेक्ट को जब फर्दर ब्रेक डाउन करोगे ना, तो ये आपकी स्पेस पूरी ले लेगा, 4-5 ले लेगा। एंड इस केस के अंदर आप स्किल्स को बढ़ाओ, स्किल्स आर वेरी लेस, सी प्लस के पाइथन, CSS, फ्लास्क, नोड.js, असेंबली, कम से कम ना 4 लाइन तक होनी चाहिए। इसका अलावा भी आपने शॉर्ट बनाया होगा, सिर्फ HTML CSS कितनी काम किया होगा। लेट्स सी, आपने यहाँ पे एक्सप्रेस लिखा है, आपने यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेस आपने यहाँ नहीं लिखा, असेंबली नहीं लिखो, उसकी जगह x86 लिख दो, गिट लिख दो, गिटलैब लिख दो, PDC पढ़ा तो कूड़ा लिख दो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दैट यू कैन राइट, पॉसिबली राइट। अगर नहीं पता, जस्ट लुक इनटू इंटरनेट, हाउ डज योर रेज्यूमेस पोजीशंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट के बाद क्या स्किल्स होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव दोस स्किल्स, सो जस्ट राइट देम डाउन। अचीवमेंट्स ना, डीन्स लिस्ट, वेक्टर लिस्ट, ठीक है, इट्स फाइन, बट इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा करो, 22 पहले, 21 बाद में, ये थोड़ा अजीब से। दीज आर टू मच, जस्ट राइट डीन्स लिस्ट, कॉमा, फॉर 21 स्प्रिंग 21, कॉमा 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 डाल के, दैट्स मोर देन नाउ। सर्टिफिकेशंस तो आपने बहुत जगह ज़ाया कर दी, आई वुड प्रीफर कि इसको ना किसी और चीज़ से रिप्लेस करो, क्योंकि जब आप ये हटाओगे तो आपके पास यहाँ पे अपनी स्पेस आएगी। वन सेकेंड। Okay, let's get back. Skills, I think you can increase the number of skills that you have. I'm sure you must have more skills on these. Achievements may achieve again. This has already been discussed, right? Look into some other resumes, how the resumes are structured, right? Structure ठीक है, but I think इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। This part is written good. इसको थोड़ा break down करके 3-3 points में लिख दो. This will take care of this space, right? Work experience भी यहाँ पे लिखोगे ना, तो work experience skills के नीचे डाल दो, कहीं भी डाल दो, ठीक है, और वो थोड़ी जगह ले लेगा, फिर स्किल्स थोड़ी नीचे आ जाएंगी, अचीवमेंट्स और फिर सर्टिफिकेशंस ना, दिस विल कवर अप योर एंटायर पेज, सो दिस इज अ नाइस, ओके। विल ट्राई टू गो क्विक नेक्स्ट। 1 पेज रेज्यूमे, गुड रेज्यूमे, ओके। नाम ठीक है, फ़ोन नंबर भी ठीक है, गेटअप भी ठीक है, जीमेल भी ठीक है, लिंक्डइन भी ठीक है, NACS पूरा लिखा करो, ठीक है। कराची भी 3.55 GPA, ठीक है। मतलब ये ना बहुत कंजेस्टेड कंजेस्टेड करके लिखती है कि BS CS और GPA एक साथ डाल दिया, ऐसा नहीं करो। CGPA इस तरह के प्रॉपर लिखो, ठीक है। और आई थिंक इसके अंदर अपना कोर्स वर्क डालो, कोर्स वर्क मैं नीचे दिख रहा था, मुझे नजर नहीं आया कि आपने कौन कौन सा कोर्स वर्क किया है, दैट्स रेलिवेंट इफ यू हैव स्पेस, लेट्स सी इफ यू कैन मेक स्पेस। अचीवमेंट्स, डीन लिस्ट, ACM कोडर्स का, फास्ट CTFs, नाइस। शाहान हसन, ओके। सर्टिफिकेशंस आपने मेटा डेटाबेस इंजीनियर क्या है, लेट्स सी। Okay, so this is a clickable link, so that's fine. अच्छा, if you have Coursera certification है ना, तो maybe you can reduce it अगर आपको लगता है कि if you want to make some space. That's my personal opinion, personal suggestion. Skill fundamentals ठीक है, these certifications are fine. But okay, these are not in chronological order. 2020 should go below. All right. Skills, languages ये ठीक है, libraries, frameworks भी ठीक है. Um, YOLO, YOLO is not a library. YOLO is not a framework.
अब यूलो लाइब्रेरी में सर आ गया कि अगर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाले यूलो की बात कर रहे हैं, इफ दैट द सेम यूलो, इफ दिस नॉट, देन जस्ट इग्नोर व्हाट आई एम जस्ट सेइंग। अब तो यूलो की पिप लाइब्रेरी आ गई, बट I think it's not the same that what you're talking about. It's something different because you are not a deep learning guy. So maybe it's very different. Just ignore, okay? Productivity can Git, Linux, Bitbucket, Markdown. It takes SRS, SGS, Lucid Chart, Figma, Canva databases, ठीक है, और cloud electives यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कोर्स वर्क में डाल दो। वॉलंटरी एंड कमिटिंग सर्विसेज में प्रोकॉम एंड डेव डे किस पोजीशन पे हो, अनलेस इट्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन में, वी कैन रिमूव इट और यहाँ पे कोर्स वर्क के लिए जगह बना लो। एक्सपीरियंस आपने क्या किया है, कैवी टेक में एस टी इंटर्न हो, रिमोट हो, इम्प्लीमेंटेड 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसको हटाओ, जावास्क्रिप्ट बूट एप्लीकेशंस विद एमवीसी एंड रेस्टफुल एपीआईज ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। थोड़ा सा अगर लिख देते ना कि सिस्टम फंक्शनैलिटी कैसे ऑप्टिमाइज हो रही है, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। यूटिलाइज रिएक्ट नेटिव, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। यूटिलाइज रिएक्ट नेटिव फॉर इंटुइटिव फ्रंट एंड इंटरफेसेस कंट्रीब्यूटिंग टू सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। रिएक्ट नेटिव फॉर इंटुइटिव फ्रंट एंड इंटरफेसेस, वो फ्रंट एंड इंटरफेसेस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा, चाहे वो 1-2 वर्ड और लगा के करो, बट करो। लेट डेटाबेस स्कीमा रिव्यूज, ठीक है, मेक सेंस, आर्किटेक्चरल डिजाइंस, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन एंड रेस्टफुल एपीआई क्रिएशन फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक कार के रैप एंड ईस, ठीक है। 2 फुल स्टॉप्स हैं, इसको यहाँ से हटाओ। सही विद डेव्स, वेब डेवलपर इंटर्न, तो मैंने किया डिज़ाइन फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस फॉर डिप्लॉयड, अज्यूर फॉर डिप्लॉयड, बट थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, वो वेबसाइट किस चीज़ के लिए थी। एफिनिटी में आपने एसक्यू इंटर्न 2 महीना किया, राइट? तो इफ यू हैव गुड नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स, तो व्हाई नॉट जस्ट एक्सप्लेन इट वेल, 3-3 पॉइंट्स में तीनों को लिखो। एंड अगर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता तो मैं कहता एफिनिटी को पहले लेके आओ। SQA intern perform black box testing with equivalence partitioning and boundary value analysis. तो दिस इज गुड, बट राइट, 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आपने 2 महीने में क्या किया, एक पॉइंट के अंदर तो नहीं किया ना, सिर्फ सिर्फ एक दिन के काम के लिए तो यूनिवर्सिटी ऑफिस नहीं गए थे, रिमोट नहीं काम नहीं किया था। यू मस्ट हैव डन समथिंग अदर देन दिस एज वेल, राइट? तो जस्ट राइट इट कि आपने क्या किया। और this shows present, that means you have been working for almost a year now, so you can have more than 3 points यहाँ पे, if you think they are worth mentioning, but इसको बढ़ाओ, 2-3 पॉइंट्स को बढ़ाओ। पर्सनल प्रोजेक्ट्स, गुड 5 प्रोजेक्ट्स हैं, एंड आई एम नॉट श्योर अगर आपको ये करने के बाद जगह बचेगी, अगर इफ यू थिंक ना कि जगह नहीं बच रही, तो मे बी यू कैन एक्सक्लूड वन वन ऑफ योर इंटर्नशिप दैट यू थिंक हैड हैज नॉट अ वेरी हाई वेट, ठीक है। आई एम नॉट सजेस्टिंग विच वन यू शुड रिमूव, you can if you want. Projects, Pirani Food Center, food order application, September database systems, design a food order. Do you have a link for that? Okay. Worked on a requirement analysis and design a food order full stack application for users with React CSS. इसको थोड़ा स्पेस देके लिख लेते ना बस। वर्कड ऑन रिक्वायरमेंट, अच्छा टेक्नोलॉजीज वाला पार्ट में कभी भी फर्स्ट पे नहीं आता, फर्स्ट पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है। वर्कड ऑन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए प्रपोजल बी, ठीक है। ये देखो, दीज आर, ये तो आपने एस जी एस वगैरह में करते ही हो, राइट? आपने एस जी एस वगैरह में साथ में करते ही हो, तो इसको, this can be better utilized. Let me just tell you how utilize Azure tool to continuously integrate development master ARM template. This is fine, but I couldn't get your problem statement. I understand कि तो food ordering application, so it's meant to deal the food ordering thing, but you can do something. एक problem statement लिख दो कि यार user के लिए भी है, इनके लिए भी है, components बनाए हैं, ठीक है। I would say that's fine. ये आपका database project भी यहाँ पे होगा, right? Food ordering और अच्छा, आपने रार पूरी अपलोड कर दी, ओके। चैटिंग एप्लीकेशन, chatting using TCP, ICP, okay. Developer clients are architecture using Express Node and the socket.io framework enabling, ठीक है, this fine. Implemented TCP IP protocol, fine. Parallel routes, LinkedIn clone, design LinkedIn clone using React using this with goals and features, ठीक है। शायद हटा सकते हो उसे। आई थिंक दिस कैन बी रिमूव, इफ यू थिंक दिस शुड बी रिमूव, इसको हटा के ना ऊपर स्पेस बना के थोड़ा कर लो। ओवरऑल दिस रेज्यूमे इज फाइन, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम दिस। necessary चीज़ें are there, you have a lot to say in your resume which is good, people don't.
यहाँ पे ना आपके एक्सपीरियंस में आई थिंक इसको थोड़ा अच्छे से ब्रेक डाउन करो, उसको 3 पॉइंट्स में करो। इन दोनों को भी 3-3 पॉइंट्स में ले जाओ। एंड नंबर 1 आई कुडन्ट सी योर एफआईपी। दिस इज़ प्रॉब्ली आई थिंक इफ दिस इज़ योर एफआईपी सितंबर से दिसंबर तक अभी तक आपने किया नहीं, दिस इज़ योर डीबीए प्रोजेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स। वेयर इज़ योर एफआईपी? दिस शुड बी द टॉपेस्ट, सबसे टॉप पे होना चाहिए। ओवरऑल गुड रिज्यूमे, नो 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 इश्यूज। ओके, हाँ फिर आतिफ, ओके। पोर्टफोलियो, वी लाइक योर पोर्टफोलियो। मैंने और आसान भाई ने आपका पोर्टफोलियो देखा था। हम्म हम ज़्यादा डीप में नहीं गए थे, बट इट्स गुड टू हैव योर पोर्टफोलियो। एंड अगर इफ़ यू कैन हैव योर पोर्टफोलियो दिस, अच्छी बात है। नाम वगैरह तो ठीक है, गिटहब विटहब भी ठीक है। एजुकेशन एनयूसीएस को पूरा लिखो, सिर्फ पास नहीं होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज। करंट जीपी, ये मैं 2-3 लोगों को देख चुका हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस यूजिंग द सेम टेम्पलेट और समथिंग, बट अच्छी चीज़ें पिक करो। करंट सीजीपी नहीं होता, सीजीपी होता ही करंट है। ग्रेड भी नहीं होता, जिस राइट कि आपने कब से स्टार्ट किया टिल प्रेजेंट। फ्यूचर की डेट नहीं बताओ अभी, अनलेस दे आस्क यू व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन, राइट। रेडो कॉलेज ये सब लिखने की नीड नहीं है। लैंग्वेजेस, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गुड, ये भी ठीक है। डेटाबेसेस भी ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी ठीक है। वेरी सिमिलर टू प्रीवियस रेज्यूमे। अवार्ड्स भी ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसको एक साथ कॉमा कॉमा डाल के लिख लिया करो। इफ यू आर लिस्टिंग कोई और रेज्यूमे, विनर ऑफ गिव डेवलपमेंट, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। सर्टिफिकेशन भी ठीक है, वी लाइक योर सर्टिफिकेशंस। आई एम श्योर इट शुड बी क्लिकेबल, राइट। वेरी गुड, क्लिकेबल होना चाहिए। नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट होना चाहिए। कोर्स वर्क इसको उसमें, अच्छा आई थिंक इसको ना बुलेट्स में लिखो, क्या पॉइंट्स में लिखो कि यार हाँ दीज आर योर पॉइंट्स। कोर्स का कंडक्ट रिकमेंडेड सिस्टम्स, अप्लाइड डेवऑप्स। कोर्स को ऊपर ले जाओ, यहाँ लिख लो। कोर्स वर्क साथ में होना चाहिए। प्रोफेशनल समरी इतनी बड़ी आपने सर्टिफिकेट इतना बड़ा लिखा है, इसका मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। इट्स नॉट नीडेड, इसमें पूरा एक्सपीरियंस आ जाता है, आपने इतना सारा डिस्क्राइब कर दिया। एंड इफ यू फील के स्पेस है लिखो, बट इतना सारा देखो। आई एम करंटली इन 4th ईयर, नजर आ रहा है यहाँ से। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये भी नजर आ रहा है। माई पैशन लाइज इन 3 key areas: साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड AI। नेवर राइट योर रेज्यूमे फॉर 3 areas, राइट योर रेज्यूमे फॉर 1 और 2। अगर आप बोलोगे तो मैं शायद फुल स्टैक और साइबर सिक्योरिटी को मिस कर देता। बट इफ यू राइटिंग कि भाई यू आर टेलिंग आई एम गुड एट 3 areas, देन इट टेल्स यू कि यू मे नॉट बी एक्सेप्शनल इन ऑल दीज 3 areas। कोई एक एरिया होगा जिसमें यू हैव अ प्राइमरी इंटरेस्ट, बाकी जो रेस्ट होते हैं दे ऑल आर सेकेंडरी। सो again, just think about it. In the realm of cybersecurity, I excel at identifying vulnerabilities, these and development, ये options हैं ये। No, do not you should be writing. I'm sorry, but इसको change करो। If you want to write professional summary, this is not professional. This is just number one, शुरू का part was rewritten, ठीक है। नंबर 2, 3 एरिया में यू कांट बी एक्सपीरियंस। इफ यू थिंक आपको 3 एरिया में एक्सपर्टीज चाहिए तो जस्ट मेक 3 resumes फॉर इट, जिसके अंदर हर रेज्यूमे के हिसाब से ना अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने एक्सपर्टीज को लिखो। अगेन यहाँ पे क्योंकि मैंने ये पढ़ा ना, मुझे इसमें एआई वगैरह के तो कोई फ्रेमवर्क्स वगैरह नजर नहीं आए। अपने काली यूबंटू वगैरह सब डाल दिया। मे बी दैट्स मोर रेलेवेंट टू द साइबर सिक्योरिटी और द फुल स्टैक साइड, बट एटलीस्ट इन एआई आई फाइंड द स्किल सेट्स यहाँ पे दैट्स रिटन। मैं नहीं कह रहा, आप में द व्हाट आई कुड फाउंड वाज प्रीटी डेफिसिट अपार्ट फ्रॉम दिस पाइथन। एंड आपने टेंसरफ्लो यहाँ पे लिखा है, बट ठीक है, टेंसरफ्लो पाइटॉर्च इज अ फ्रेमवर्क, बट राइट समथिंग मोर देन दैट इफ यू टॉकिंग अबाउट एआई। ओके, systems, अच्छा, resource development initiative internship, software engineer, okay, worked in a cloud app development and maintenance department with a team working on human। देखो, आपने बताया कि आपने इस काम किया, इस डिपार्टमेंट में काम किया क्या, बट क्या काम किया वो आपने नहीं लिखा। क्लीन डेटा यूजिंग पाइथन, क्लीन डेटा यूजिंग पाइथन। नंबर 1, हाउ डू यू डिफाइन क्लीन डेटा? क्लीन डेटा का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर 1, क्या आपने जैसे CSV फाइल है उसमें से आपने डुप्लीकेट हटाया, ये सारी चीज़ें किया तो बहुत तरीके की चीज़ हो सकती है। और क्लीन डेटा का मतलब है कि आपने क्या हियरार्किकल लेवल पे चेंजेस किए, आपने जो है वो कॉलम्स वगैरह को ब्रेक डाउन किया, नॉर्मलाइज किया, क्या किया यूजिंग पाइथन, ठीक है। प्रोड्यूस एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स टू बी डिप्लॉयड ऑन लाइव प्रोडक्शन पे एसक्यूएल स्क्रिप्ट बनाया, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। बट आई कुडंट अंडरस्टैंड योर यार वहाँ पे करना क्या था, मतलब अगर आपने 2 महीने इंटर्नशिप की है तो आई एम श्योर ना यू डिड समथिंग मोर देन दैट। व्हाट वाज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स? आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम किया, बट व्हाट डिड यू डू एग्जैक्टली?
राइट? सो दैट्स नॉट क्लियर। 3 पॉइंट्स में लिखो कम से कम, आई एम श्योर यू कैन राइट दैट। हेड वेब डेवलपमेंट या आपने एसीएम में लिखा, दिस डज़ नॉट हैव अ लॉट ऑफ वेटेज, आपकी वेटेज यहाँ होनी चाहिए, यहाँ आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है। This I'm just gonna ignore for now, because this doesn't have a very high weightage. It's fine if you write it. Experience में count नहीं होता लेकिन ये, because this can be your voluntary और कहीं पे side पे, but ठीक है, if you don't have a lot to write, you can write it. Project में I think आपका FIP मुझे नजर नहीं आ रहा कहाँ पे है। अगर इसमें तो कोई FIP है तो just write FIP कौन सा है। Inventory management system, post guess. Are you sure you have written the right spelling? एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस में आपने ना पॉइंटर्स में लिख दिया कि इसमें क्या 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 है, मैनेजर्स, इन्वेंटरी लेवल, ऐसा नहीं होता। 3 पॉइंट्स में लिखो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अपना कैसे सॉल्व किया और क्या टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए सॉल्व किया। एनईबी रिव्यूज, पाइथन रिकमेंडेशन सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। नो, कौन सा न्यूरल नेटवर्क था? एमएलपी था। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग से क्या था? यूजर्स गेट 10 सिमिलर मूवीज। नो। प्रॉब्लम्स अगेन, मुझे ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं आपको डायरेक्ट देख के बता रहा हूँ। इवन हसान भाई हैड द सेम रिव्यूज। द प्रोजेक्ट दैट यू आर मेकिंग दिस टेस्टिंग यूजिंग सी मेक, द समवन हु नोज सी प्लस प्लस एंड सी मेक दिस, द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दैट यू रोट, इट डजंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट। कोडर्स कब की आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि समथिंग रॉन्ग है, राइट, बट योर प्रोजेक्ट्स आर नॉट वेल रिटन। इसमें एक एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, दिस डजंट टेल वेरी मच अबाउट योर प्रोजेक्ट। इट जस्ट सेड के you have done something, you have done your project, but maybe you can राइट मोर देन दैट के प्रोजेक्ट्स हमने क्या क्या किया। आपने 1 2 3 4 5 6 7 अपने 7 प्रोजेक्ट्स लिखे, राइट। 7 इज फाइन इफ यू हैव अ लॉट टू टेल अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, बट आई थिंक अगर आप इसको ऊपर वाली बात करो ना, जो आपने 3 रेज्यूमेस बताएं कि भाई मुझे एआई भी पसंद है, वेब भी पसंद है और साइबर सिक्योरिटी भी पसंद है, अगर आप उन तीनों के लिए सेपरेट रेज्यूमेस बनाते देन आपके प्रोजेक्ट स्प्लिट हो जाते, देन यू वुड हैव मोर स्पेस टू राइट इट। तो आई व्हाट माय रिकमेंडेशन इज कि ये बुलेट बुलेट तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना मसला नहीं है, कोर्स का गला भी डाल दोगे, बट फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस। और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को ठीक करो, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस में जो आपका वहाँ पे सिस्टम्स में एक्सपीरियंस है, जस्ट टेल समथिंग गुड अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में अच्छी चीज़ें बताओ। और लास्ट लास्ट चीज़ क्या है, ये हेड डेवलपमेंट, हेड वेब डेवलपमेंट, यू थिंक आपके प्रोजेक्ट्स में बताने की जगह नहीं है तो भी छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। इसको हटा के ना प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, FIP वगैरह लिखो, मुझे नहीं नजर आया। सो आई वाज इंटरेस्टेड इन योर resume when I read these, but the interest was I lost those interest when I read here। ये मैं नहीं कह रहा कि गलत चीज़ें हैं, these are nice, spam email classifier, KNNs, TF-IDF, these are nice techniques, but इससे आप बुलेट्स में डाल के लिख रहे हो ना, तो that doesn't cast a lot of weight, just tells me कि you know about these things, so maybe just write those in details, 3 points में, in the manner that I've said। ओके, ऊपर गिटहब लिंक्डइन मिसिंग है। लिंक्डइन आपने यहाँ पे डाला हुआ है, ऊपर डालो उसको गिटहब पे। सीजी पे हटा दो 3 पॉइंट, इफ यू हैव 3.1 यू कैन मेक रिमूव इट। एंड इफ यू स्टिल वांट टू राइट, लिखोगे 3.1 आउट ऑफ 4 है तो लिखो, बिकॉज देयर आर डिफरेंट स्केल्स। पर्सनल डिटेल, दीज आर नॉट वेरी वेरी पर्सनल, आप ठीक है, सीजी पे इज पर्सनल एंड लिंक्डइन इज पर्सनल, और लिंक्डइन वगैरह को यहाँ पे ऐड करके लिखते रादर देन गिविंग स्पेस। to pursue my career in a reputable, dynamic and growth oriented organization to shape our professional experience। देखो यार, करियर ऑब्जेक्टिव में ना, अच्छा पहली बात तो करियर की एग्जाम्पल भी गलत है, एक स्पेलिंग भी गलत है, तो एटलीस्ट यार जस्ट हैव अ ग्रामरली रन ऑन योर resume। करियर ऑब्जेक्टिव में ना, यूजुअली कंपनीज आर लुकिंग फॉर कि व्हाट द एम्प्लॉय इज ब्रिंगिंग along with him, and you are saying you want to pursue in a dynamic this is this, right? So okay, you want to do this, but how does it help the company? What are you bringing along with you? So that is something that is missing। Education में you have right, come on man, you have writing your A levels first, this is not needed at all। इसको पहले ले जाओ, BS in software engineering पूरा लिखो, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फास्ट NUCS का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज कॉमो फास्ट, ठीक है, इट्स फाइन। थोड़ा कोर्स का लिखो कि 2 3 आपने कोर्सेज वगैरह किए हैं, कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद पाइथन, देखो QA फंडामेंटल, दिस डज नॉट हैव अ वेरी हाई वेट, इसको प्राइमरी लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस को पहले लेके आओ, प्रोजेक्ट्स को पहले लेके आओ, व्हाई डू इवन राइट दिस, इसको साइड पे लेके आओ। एक्सपीरियंस वेब डेवलपमेंट इंटर्न 47 टेक कराची, collaborated with a team of developers to design and implement। देखो, टीम ऑफ डेवलपर इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन यूजिंग, हाँ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन अच्छा है, यूजिंग ये सारी चीजें लिखी, इट्स फाइन। और ऑप्टिमाइज वेबसाइट परफॉर्मेंस, हाउ, कैसे किया, क्या किया वेबसाइट परफॉर्मेंस इंटीग्रेटेड, ठीक है। सो दैट इज समथिंग आई फील के इज नॉट रिटन। और इंटीग्रेटेड APIs एंड कंडक्टेड कोड रिव्यूज, आई ऑल्सो एक्टिवली इंगेज। अच्छा, इसको ना 3 सेंटेंसेस में डिवाइड करो, आई फील कि आपने कॉमा कॉमा डाल के बहुत सारी चीज लिख ली। 3 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऊपर लिखो कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व की,
नंबर 2 कैसे सॉल्व की, और नंबर 3 कौन सी टैग यूज़ की। अगर आपके पास बहुत सारी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की तो तीनों पॉइंट्स में एक-एक प्रॉब्लम कॉमा, मतलब एक ही पॉइंट के अंदर सिंपल लिखो कि यार सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेबसाइट परफॉर्मेंस यूजिंग दिस ऑप्टिमाइजेशन, या फिर डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, फैचिंग ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग दिस, खत्म। प्रोजेक्ट्स, स्विफ्ट ई-कॉमर्स एफआईपी नज़र नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट्स की मुझे डेडलाइंस नज़र नहीं आ रही, प्रोजेक्ट्स बहुत क्लोजली स्टैक हुए हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। और वेबसाइट डेवलप डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलप डायनेमिक ग्रामर इज नॉट राइट, वेब एप्लीकेशन यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट विद एनहांस्ड इंटरएक्टिविटी, हाउ डू यू टेल कि इट्स एन एनहांस्ड इंटरएक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस पावर्ड बाय द रिएक्ट जेएस। तो कोई कंपोनेंट्स होंगे इस तरह की चीज़ें, तो उसको मेंशन करो जरा। वेबसाइट प्रोवाइडेड रोबस्ट सर्च कस्टमर रिव्यूज, दिस इज गुड, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको पहले लेके जाओ, ठीक है। बट मोर राइट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फास्ट रिस्पॉन्सिव सर्च, इस तरीके से कुछ 3 पॉइंट्स में डिवाइड करो, डोंट जस्ट राइट अ पैराग्राफ। डेवलप अ टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूजिंग react.js फॉर द फ्रंट एंड एंड द node.js फॉर द बैक एंड। ठीक है, हाँ, आपने ना टेक्नोलॉजीज पहले लिखी हुई हैं कि यार मैंने ये काम किया यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज ऑलवेज शुड बी द लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट में लिखो कि टेक्नोलॉजीज आपने क्या सॉल्व किया है। The project aim to provide an intelligent task prioritization. This is a problem statement. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कौन से, क्या एक्यूरेसी थी उनमें, कितने टाइम पीरियड में आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है, स्टेक होल्डर्स क्या है, इस तरह की 2-3 चीज़ों के बारे में सोचो। हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रिडिक्ट हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज रिस्क विद हाई एक्यूरेसी क्या है, इसको क्वांटिफाई करो, व्हाट इज एक्यूरेसी, ठीक है। यूटिलाइज मेडिकल डेटा एनालिसिस फिक्चर इंजीनियरिंग एंड एडवांस एल्गोरिथम टू प्रोवाइड, ठीक है। मेडिकल डेटा एनालिसिस, ठीक है, फिक्चर इंजीनियरिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, व्हाट टेक्निक्स डिड यू यूज, जस्ट राइट देम डाउन। एडवांस एल्गोरिथम्स, व्हिच एल्गोरिथम्स, व्हाट एक्यूरेसी डिड, तो इस चीज़ों के बारे में लिखो। योर प्रोजेक्ट्स आर गुड बट आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ मोर प्रोफेशनल मैनर। इसको जब 3-3 लाइनों में ब्रेक करोगे ना, 3-3 पॉइंट्स में, तो इट वुड टेक योर स्पेस। इसको अचीवमेंट्स के टॉप 5 इन स्पीड प्रोग्रामिंग, टॉप 10 इन प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, मे बी इंक्लूड सम मोर अचीवमेंट्स, और जस्ट राइट कि कौन सा कॉम्पिटिशन था, कॉम्पिटिशन का नाम क्या था। स्केल्स इस तरह नहीं लिखो भाई, इतनी सारी स्पेस ज़ाया नहीं करो, कॉमा कॉमा डाल के लिख लो, कुछ इस तरीके से लिख लो। CSS जावास्क्रिप्ट, या उसको डिवाइड कर लो कि भाई स्किल्स में प्रोग्रामिंग में ये, तो ये लाइन में 2 लाइन में सारी आ गई, फिर डेटाबेस आ गया तो 2 लाइन में सारी आ गई। मशीन लर्निंग इज नॉट अ स्किल, मशीन लर्निंग के अंदर क्या स्किल था उसके बारे में लिखो, ठीक है। रिएक्ट जेएस वगैरह स्किल्स, ठीक है, बट इतनी सारी स्पेस नहीं करो। हॉबीज, नोबडी केयर्स, ठीक है। हॉनेस्टली जितना कंपनीज बोलती हैं नोबडी केयर्स अबाउट दीज हॉबीज थिंग्स, यू डोंट हैव टू राइट इट। सो अगर आपको लगता है कि दिस विल, क्योंकि आप ये भी हटा दोगे, जाहिर है आपको ये हटाना ही पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, स्किल्स भी आप कर लो, तो यू हैव सम स्पेस इन दिस, नॉट नेसेसरी। मतलब मुझे ये बहुत जगह लेता हुआ नजर आ रहा है, इसको ना थोड़ा साइड पे ले आओ, इसको यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल के लिखो, थोड़ा टेक्स्ट को ना छोटा करो, इट्स फील लाइक, मैं इसको अगर दूर से भी देखो ना तो दिस इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, दिस इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट। ये जैसे करियर ना, देखो आपने ऊपर भी स्पेस छोड़ी हुई है, फिर यहाँ भी स्पेस छोड़ी हुई है। करियर ऑब्जेक्टिव तो पहली बात तो हटेगा आपको, या फिर आप इसको दूसरी तरीके से रिराइट करोगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ, ठीक है। एजुकेशन में जब आपने सिर्फ इंजीनियरिंग लिखोगे ना, तो फिर आप अपना कोर्स वर्क यहीं पे डिफाइन कर दोगे, राइट। फिर आप ये हटाओगे, एक्सपीरियंस को ऊपर लेके जाओ, थोड़ा 3 पॉइंट्स में ब्रेक करो, प्रोजेक्ट्स को लेके जाओ, 3 पॉइंट्स में ब्रेक करो, अचीवमेंट्स और कोर्स को यहाँ लेके आओ, हॉबीज को हटाओ, स्किल्स को थोड़ा डिस्क्राइब करो, तो ये हो जाएगा। इफ यू फील कि यार रेज्यूमे जगह खाली बहुत लग रही है, just change your template. I don't feel it's needed, but I think there are a lot of things that you should to need remove and add. Okay. नाम ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ठीक है, बट आइडियली डोंट यू थिंक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला टाइटल यहाँ आता है, बट ठीक है, चल जाएगा। ये वाला पार्ट हटेगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अमीन पर जाते आगे जो ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं, दिस डजंट हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन, ये हटाओ। कराची पाकिस्तान गेटअप शेटअप ठीक है। पर्सनल वेबसाइट, अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस eager to start his software engineering journey, who is also interested in the field of artificial intelligence. भाई एक फील्ड से अप्लाई करो, you can't be applying for multiple fields. Seeking opportunities to apply my skills and expand my knowledge in the field of software engineering and machine learning. You can't be applying to 2 fields. Apply for one. Make your resume for one field. ठीक है? And personal profile तो ठीक है, but जो आपने statement लिखा ना, that should tell कि what are the things that you're bringing along with you in the company, rather than कि आप बताओ कि I'm looking for these positions. Obviously, you're looking for the position. That is why you applied, right? So these are the things, इसको थोड़ा correct करो. Um, okay. What else do we have?
स्किल्स को यार, अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई नोटिस ना, हमने पहले भी देख चुके हैं, इट फेल्ट लाइक एजुकेशन को शायद यहाँ ले आते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी स्किल्स पहले नहीं आती, और स्किल्स में इतनी जगह वेस्ट ना करो। आई डोंट थिंक स्किल्स शुड बी गिवन दैट मच स्पेस। इसको एक ही लाइन में ब्रेक करके लिख दो। अच्छा, see, your GPA is good, right? 3.81, it's a highlight for you. तो why don't you write this education in the first thing? इसको पहले लिखो। नंबर वन, आई डोंट लाइक योर टेम्पलेट, ओके? पहले स्टार्टिंग वाला पार्ट ठीक था, ये बीच वाला जो एक लाइन बनी हुई है ना, इट्स नॉट वेरी इंट्रिगिंग। मे बी यू कैन थिंक ऑफ सम अदर टेम्पलेट इफ यू वांट दिस टेम्पलेट ना। तो थोड़ी स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस आया करो। पर्सनल प्रोफाइल मैं शायद ये ना लिखता, इतनी स्पेस आया करनी, क्योंकि आपने अच्छी खासी स्पेस ऊपर ले ली, इसके बाद आप ये भी लिख रहे हो, फिर आपके पास लिखने के लिए जगह कम है, राइट? तो आई फील कि दिस पार्ट कैन गो हेयर, ठीक है, एजुकेशन वाला पार्ट। एंड इट फील्स लाइक ना, इट्स नॉट इवन अ 50-50 डिवाइडर, इट फील्स लाइक यार ये बहुत 40% होगा आई थिंक। हाउ एवर इट शुड बी लाइक 1/3, वन रेशियो होना चाहिए 1:3 का, तो ये 1 होना चाहिए एंड ये 3 वाला पार्ट होना चाहिए, ताकि बिकॉज सी यू हैव दी स्पेस दैट्स वेस्टिंग, राइट? तो आप फिर वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, देन व्हाट डू यू डू? आपके वर्क एक्सपीरियंस आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न, आपने मोटिव कीप ट्रैक में काम किया है, ठीक है? सॉरी, आई एम सॉरी, मोटिव formerly keep track and I was right. Working in the back-end engineering team consists of diverse individuals from all over the world. This is not required यार, who cares all over the world, दुनिया में कहीं पे हो, एक पाकिस्तान का बंदा अगर वहाँ जाके काम कर रहा है, that doesn't mean कि all over the world आपने काम किया, right? So maybe it's not required. This tech stack was Ruby on Rails. टेक स्टैक ठीक है, बट काम क्या किया बैकएंड इंजीनियरिंग में, ये नहीं बताया आपने। बैकएंड इंजीनियरिंग का आपका रोल क्या था? लर्न हाउ टू राइट कोड विद द बेस्ट प्रैक्टिस, this is your personal achievement. This is not something that you did in the company, right? Or even though you learn how to write, maybe you could have written that I wrote the best practice code for this component in my company. That is more valuable. Operated in an agile environment, contributing to full CI/CD pipeline. Operate in agile environment, contribute. Oh, how much did you contribute? What did you contribute? Can you quantify them? Do you have any metrics to say, okay, this is what you have done? Learn how pagination. See, if you have implemented, if you have learned how this is done, this is not valuable because this is your self-learning. Okay, and how testing is done in the backend. So it's your learning process. You are supposed to learn there. तो अब इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बट आई फील कि आपने क्या किया ना, दैट पार्ट इज स्टिल मिसिंग। ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस बाय शिफ्टिंग द लोड ऑफ द एपीआई फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड। तो हाउ डिड यू डू दैट? हाउ डिड यू शिफ्ट द लोड? लोड बैलेंसर्स लगाए थे, क्या लगाया था? तो शिफ्टिंग द लोड ऑफ द एपीआई, हाउ डिड यू डू दैट? कैसे ऑप्टिमाइज किया विद एक्सपोनेंशियली? व्हाट, हाउ मच टाइम, कितना टाइम एक्सपोनेंशियल? जस्ट रीफ्रेज आर्ट और वर्किंग एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस अच्छा है, बट इसको इतनी सारी स्पेस दी थी जितनी नीड नहीं थी। 3 पॉइंट्स वुड बी इनफ, ठीक है? एंड इसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर करो। आई डोंट लाइक द हाउ 40% डिवाइडेड। इसको थोड़ा और इस तरह लेके आओ, और थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, मे बी दैट वुड हैव मेक सेंस। एजुकेशन इधर आएगा। आपने NUCS का नाम पूरा लिखा है, विच इज गुड, फास्ट, ठीक है? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस गुड, 8 to present GPA is good, स्टूडेंट ऐप असिस्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, टीचिंग असिस्टेंट, सीखे मेंबर, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज। अच्छा, एजुकेशन में ना बहुत सारी जगह दी थी, इतनी जगह आइडियली इसको देनी नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा टेक्स्ट करके यूनिवर्सिटी के नाम को स्ट्रीट में लिख लेते, थोड़ा ऊपर ले जाते, तो दैट वुड हैव बीन बेटर। कोर्सेज ठीक है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आई लाइक दिस कि आपने हेडिंग वाइज लिखा है, इंजरीज डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग XCI, ठीक है? डिटेक्टिंग abdominal injuries using CT scans using advanced machine learning। और कौन से ML एल्गोरिथम? सही लिखा। डेटाबेस साइज आपने लिख दिया कि 400 GB का डेटा साइज है, बट कौन से एल्गोरिथम यूज किया आपने? यू हैवंट रिटन दोस। Visualization of those injuries using XCI techniques such as see ग्रैड कैम एंड लाइम, ये विजुअलाइजेशन के लिए तो ठीक है, बट आपने इंजरीज डिटेक्शन के लिए क्या यूज किया? कैन आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? दैट इज मिसिंग। 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करो, ठीक है? टाइमलाइन लिखो कि आपकी टाइमलाइन क्या था आपके प्रोजेक्ट का, and just write के number one, what was your problem statement? Number two, ओके, नंबर टू के हाउ डिड यू सॉल्व इट? नंबर थ्री के व्हाट वाज द टेक्नोलॉजीज यूज? इसको टाइमलाइन में लिखो, कब से कब तक का प्रोजेक्ट है। आई एम श्योर है 5 की टाइमलाइन पता है, बट लिखो लर्निंग एक्सपीरियंस। अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से लिखता है, इसकी जगह लिखोगे प्रोजेक्ट। सी, क्रिएटेड अ कंप्लीट वेब ऐप फॉर द कोर्स ऑफ डेटाबेस, नहीं यार, ये इज नॉट वेरी वेल रिटन। आपने डेटाबेस के कोर्स के लिए लिखा, बट व्हाट वाज द प्रोजेक्ट दैट यू डिड? लर्न हाउ टू बिल्ड द रेस्ट APIs, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड द होल। देखो,
you learn the life cycle of the full stack application. How does it help? How does it tells कि यार how what did you apply? For example, मैंने कोई कोर्स पढ़ा, मैंने कोर्स सीखा, then I forgot about it. Then shall I write it कि मैंने I learned these concepts in these courses? No, right? You should tell कि यार what did you do in the book sharing application? क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व की जो कि कोई नहीं कर रहा, राइट? इवन तो अगर वो सब कर भी रहे हैं तो what approach did you use? तो अप्रोच के बारे में लिखो, थोड़ा थॉट प्रोसेस के बारे में लिखो. ई कॉमर्स पे आप क्रिएटेड फ्रंट एंड फॉर एन ई कॉमर्स क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, आपने फ्रंट एंड बनाया. लर्न हाउ टू लर्न नहीं ना, इम्प्लीमेंटेड होता है. लर्न क्या होता है मतलब इस तरह लिखते कि मैनेज स्टेट्स इन रिएक्ट एंड इम्प्लीमेंटेड रिएक्ट रिडक्स और इस पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी. मुझे इस कंटेंट के बारे में नहीं पता कि इसमें कैसे कंटेंट लगते हैं वेब एप्लीकेशंस में, बट इवन देन दिस नॉट इंट्रिगिंग मी. कोई ऐसे वर्ड्स भी होते हैं ना जो मुझे बताते हैं कि आपने ये टेक्स्ट यूज किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया. यार सी ओवरऑल आई फील के द ओनली गुड थिंग अबाउट नहीं द वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट योर रिज्यूमे इज योर जीपीए, ठीक है. मे बी एम बायस्ड या पता नहीं, बट लेकिन इफ यू हैव दैट ना, इसको पहले लेके आओ. डोंट गिव दैट मच स्पेस टू योर एजुकेशन सेक्टर. एजुकेशन छोटा सा होगा. वर्क एक्सपीरियंस में आपने 5-6 पॉइंट्स लिखे, आई थिंक इसको कम करो. इसको 2-3 पॉइंट्स, लेकिन वेल रिटन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है. ये होना चाहिए. आपका रोल क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न लर्न की हैं पूरे रेज्यूमे में. व्हाट आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू हैव अप्लाइड इन द प्रैक्टिकल और इन द इंडस्ट्री, राइट. कुछ काम के FIP आपने हेडिंग्स तो मुझे बड़ी बड़ी नज़र आ रही है, बट इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है उसके अंदर. आई एम नॉट श्योर व्हाई. एंड सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन डाल दो, ठीक है. बाकी ऐड योर मोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है. आपके पास अंडरग्रेड में आई थिंक 4 से 5 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. एंड इफ यू हैव गुड GPA दैट मीन्स यू हैव मस्ट हैव सबमिटेड दोस प्रोजेक्ट. और खुद से भी किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो भी कोई मसला नहीं है. लेकिन कुछ तो क्योंकि मैंने आपके मुझे याद पड़ा, मैंने गेटअप पे देखा था, आई मीन फॉर जाओ सोलर, राइट. तो अगर ये वाले कीपर ऐप है, इस तरीके की पोर्टफोलियो वगैरह तो नहीं है, बट न्यूमेरिकल कंपनी वगैरह भी नहीं, बट कोई भी इस तरह की चीज़ हो जिसमें यू थिंक दैट शुड बी वर्थ मेंशनिंग इन योर, इसमें तो प्रोजेक्ट्स में डालो. इट लुक्स लाइक देयर इज लॉट ऑफ स्पेस दैट यू कैन यूज एंड you have wasted the space. Why I say wasted, because the points कम करोगे तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी. FIP इज नॉट वेल रिटन. FIP के बारे में थोड़ा अच्छा लिखो, और जो FIP 1 की रिपोर्ट्स ऑफ सबमिट कराते हो ना, उसको क्लिकेबल लिंक पर डालो.